So I welcome you all to this session on cyber crime and cyber security. And we are really fortunate to have with us a team of speakers, learned speakers, who will be giving very good presentation and knowledge to us regarding cyber crime. And आपको आज थोड़ा सा difference लगा ही होगा national anthem में. Yes. So this national anthem version was brought by Darshan, and he attempts to show us how the AI generated images can be used or misused, right? So to give a formal introduction, I would like to call our coordinator, CMNG Talwar. Good morning, everybody. Welcome to this session on cybercrime and its legal implications on chartered accountants. To take you through this session is Advocate Darshan P. Bafna, and Rajesh S. Dongre. A brief introduction about both of them. Advocate Darshan P. Bafna is a qualified law graduate from G.H. Raisoni Law School, Nagpur, with over 6 years of experience in legal practice. He possesses a strong passion for information technology law and cybercrime investigations. As a co-partner in the reputed law firm Bafna Law Associates, he works alongside his father, Advocate Pankaj B. Bafna, founder, and elder brother, Advocate Akshay, co-founder. His educational background is like diploma in ethical hacking from Pristine Info Solutions and Fake Root Securities Solutions Private Limited. Diploma in Insolvency and Bankruptcy Law from Indian Merchant Chambers. CyberFit Program Certification from Asian Schools of Cyber Law. Certificate of Participation ISEA, Information Security Education and Awareness. Cybersecurity Certification from MET Future Academy. His public engagements are conducting seminars in educational institutions like Ram Ratan International Schools and Parle Tilak Vidyalaya. Topic covers include social media and cyber crimes, as well as understanding and dealing with cyber crimes. He assists Mumbai Police with his extensive educational background and practice experience in both law and cyber security. Advocate Darshan P. Bafna is well equipped to handle legal issues related to technology and cyber crime. His contribution to the field of information technology law and cybercrime investigations make him a valuable asset to Bafna Law Associates. Brief introduction about another speaker, Rajesh S. Dongreji. He is a master in computers, master's in business administration, bachelor of law, and postgraduate diploma in cyber law. He has over 27 years of experience in information technology and cyber securities. He has worked with companies like CMS Computers Limited, IBM Limited, Kotak General Insurance, and currently working with HDFC Ergo as Chief Information Security Officer. With this brief introduction, I would like to call upon the speakers to take over the dice. Before that, I would request Mr. Dani Khandelwalji and DP Tripathi to please come over and give the mementos to the speakers. Our past convener, Mr. Krishna ji, also will join us.
Before we start the session, I would like to make an announcement. We are procuring the WIRC referencing manual at a very discounted rate, which will be made available next week. So in case you are interested in getting that, please give your confirmation to Navna. So we can order the requisite number of copies. And now, Pankaj and Darshan, over to you. Good morning. बहुत अच्छा लग रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच में एक काराकोट फिगर्स जो देखते हो उनके बीच में लास्ट वीक आई वाज इन द इंस्टीट्यूट एट बीकेसी थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कमिंग ओवर हियर एक्चुअली मेरा बहुत बार दो बार कैंसिल हुआ ऑफिस हो गया और मैं आ गया हूं फाइव ग्रुप आई टुक माय सन एज वेल एज माय पार्टनर राजेश डोगरे टू टेक फॉर दिस सेशन अभी स्पेशली बिकॉज़ सीए के इश्यू जिसके लिया जा रहा है because I am a faculty for the Maharashtra Police, Goa, Telangana and Jammu Kashmir Police for handling of cybercrime cases and investigation. Recently, जो पांच 6 महीने से जो issues आ रहे हैं cybercrime is where the qualified professionals are being taken into task, specifically the chartered accountants. Why are they getting caught hold of? क्या issues है? क्या knowledge नहीं है उनके पास जिसके कारण law enforcement agencies are going to them and taking custody? हाँ तो criminals नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी को क्रिमिनल्स के एक दर्जा दिया जाता है why is it because of the type of crimes which are increasing previously आज से 15 साल 20 साल पहले क्राइम्स अगर कुछ होते तो हमारे दिमाग में पांच छह केसेस ही आते थे या तो मर्डर होगा रेप होगा या बैंक डकैती होगी 5 या 6 अब सिनेरियो ऐसा हो गया है स्काई इज द लिमिट आप कुछ सोचते हो कुछ और करते हो कुछ और हो जाता है you won't believe every day I am getting around 10 to 12 cases per day of financial frauds. इसमें सिर्फ प्रैक्टिस शुरू हो गई है साइबर में ये हालत है where आज से 15 साल पहले when I used to tell people that one day will come where your own identity will be harmful to you. You will be feared of our own shadow. लोग हंसते थे. Internet will not be a boon, it will be a curse. हंसते थे. आज वही हालत होगी. We are carrying our gadgets. We know what we are carrying, but we don't know how to use it. सबसे बड़ा इशू है हम इंटरनेट वर्ल्ड की जानकारी रखते हैं लेकिन अंदर क्या क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता अब मैं अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग इंटरनेट हो सबके हाथ में 100% एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा तो बोलेगा कि नहीं ये क्या चीज है नहीं हमें नहीं मालूम 70 प्लस को भी पूछेंगे तो उनको भी पता है और 3 साल के बच्चे को पूछेंगे उसको भी पता है उसको यूट्यूब चलाना आता है am I right? उसको सिखाने की जरूरत पड़ती है वो दादा को सिखाता है और फिर दादा ऐसे एडिक्ट हो जाते हैं यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे वो छोड़ देगी because this is where technology is taken away issue is that how professionals are also getting addicted because we have a Mercedes car but we don't know the brand उसकी safety measures ना करें सब लोग कहते हैं कि हमारे पास एक लेटेस्ट गैजेट का फोन है वो एक्सपेंसिव है वो भी आप टोटली सिक्योर आई डोंट वांट टू नेम क्योंकि बार-बार नाम ले रहा हूं और मेरे यूट्यूब पे जाता है कहीं मेरे वो लोग केस में डाल देंगे मेरे को तो है एक ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड ले लेके घूमते हैं तो मैं उनको यही पूछता हूं व्हाई हैव यू टेकन दिस इट्स हाईली सिक्योर तो सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है सबसे पहले नहीं इट कैन नॉट गेट हैक मतलब कंपनी ने राइटिंग में दिया है इट कैन नॉट गेट हैक नो तो फिर क्यों ले रहे सब स्टेटस से मतलब स्टेटस से तो आपके पास बस 150-200 करोड़ के बैंक में जाना चाहिए पहले से ही 1.5 स्टेटस ही अगर संभालना है यू शुड नो व्हाई यू आर टेकिंग दैट नहीं पता सेकेंडली अगर आप जैसे मैं उनको जस्ट आई हैव अ डिबेट विद देम सब लोग मर्सिडीज ले रहे थे मर्सिडीज द हाई एंड कार मोस्ट सिक्योर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं खुशी में बिकॉज चलाने वाले को उसकी फीचर्स नहीं पता the same way when we use our gadgets we don't know the features what is there available in those gadgets अब CAs के बीच में because we are professionals you people have figures in your hand no certifying authorities for financial things अब जो क्राइम चल रहे हैं आज की तारीख में सबसे लेटेस्ट क्राइम 3 टाइप्स ऑफ क्राइम चल रहे हैं एनी आइडिया जो रोज पेपर में पढ़ते होंगे या फिर आप में से भी कोई ना कोई विक्टिम बने होंगे 100%
वाह, सबको सबसे पहले वही आया। यस, सेकंड डिजिटल एरर्स तो सबने बोल दिया। Floating sound and then दैट्स अ डीप फेक, जो अभी जो आपको वीडियो बताया गया है, दैट्स अ डीप फेक। और कुछ तो इतना ब्लैक मत बनिए, न्यूज़पेपर में आज वही लिखता है। आप में से कोई उसमें इन्वॉल्व भी होंगे ट्रेडिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी, कोई हाथ तो नहीं करेगा, मुझे पता है ना ही बोलेंगे, लेकिन अगर मैं अंदर घुस जाऊं फाइनेंस के तो पता चलेगा ये तो बाप रे इतना सब पड़ा है अंदर, ट्रेडिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी। एंड थर्ड, आप लोग भी सुबह सुबह काम कराएंगे बताया जा रहा है तो see first is digital arrest which is a very horrifying, आप सोच नहीं सकते हो क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। सेकंड क्रिप्टो करेंसी के अंदर, थर्ड इज अ स्टॉक मार्केट स्कैम। इन तीनों के अंदर आपके प्रोफेशन के लोगों को कस्टडी मिल जाएगी। But are you doing this right? No. Then also why you won't believe, आपको अगर ऐसे ही चेक करना है, you go to any, walk into any police station, go to the cyber division over there, you come to the average 20 to 25 FIRs are being registered, उससे 5 times तो लोगों को भेज दिया जाता है वापस, और सारे के सारे फाइनेंशियल शॉर्ट्स के, उसके अंदर 90% will be sitting for stock market scam। लाइन में बैठे हुए रहेंगे, आप 5वें नंबर हो, 4 ऑलरेडी बैठे हैं, उसको बोलिए तू क्या हुआ, मेरा 40 लाख है, अच्छा आता कितना है, मेरा तो 2 करोड़ है, फिर वो 40 लाख वाला हाश इसका 2 हो गया, लेकिन फिर वो आगे और पूछेगा मेरा 7 गया, वो 2 करोड़ और होगा, मैं अकेला नहीं हूं और भी है, लेकिन क्यों गया, हाउ इज इट गॉन। पहले होता था, आज से 1 साल पहले की हैकिंग होती, the criminals used to penetrate into your system, take away your data, take away your credentials and log into it, identify yourself and do the transaction। अब वो जमाना गया, वो आप ही से करवाते हैं, अब वो मैं नहीं बोल सकता हूं whether you are hacked or you are ingredients। आपको ही ऐसे ऐसे लॉलीपॉप्स दिया जाते हैं कि people 9 out of 10 follow into it, then they start investing themselves। जब खुद इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू आर ट्रांसफरिंग योर फंड्स टू अ पर्सन, अननोन पर्सन whom you believe there is a very high profile wealth manager। कोई एग्जांपल्स है किसी के साथ ऐसा हुआ है या किसी ने सुना है स्टॉक मार्केट स्कैम? व्हाट्स द गुड फॉर्म, अब कैसे होता है? अगर मैं अभी यहाँ पे बोलूं चलो सी सर मेरा प्रोफाइल देखा आपने, मैं आया हूँ एज अ स्पीकर, आई एम अ लॉयर, मुझे आप लोगों से 1000 रुपया कंट्रीब्यूशन चाहिए, विल यू गिव? मुझे पता नहीं है, पहले क्वेश्चन है क्यों चाहिए अभी, यू कम एज अ स्पीकर, गो एज अ स्पीकर, ये 1000 रुपए क्यों चाहिए, कितने सवाल आ जाएंगे। लेकिन जब कोई अननोन बंदा आपसे लाखों करोड़ों मांगते हैं, आप दे देते विदाउट वेरी मनी, बिकॉज दैट टाइम यू फील यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट, मेरे से कोई मुझे उल्लू नहीं बना सकता, आई एम द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड। बाद में हम लोग कहेंगे दिस इज द बेस्ट फूल इन दिस वर्ल्ड, आई एग्री। व्हेन जब वो पुलिस स्टेशन आते हैं तो हम पुलिस वाले का जो लैंग्वेज आता है स्टॉक मार्केट स्कैम या डिजिटल अरेस्ट में, यू कैन नॉट बिलीव, बेड़ा लगा होता है, हां जोड़े जोड़े पूरे होते हैं, बंद देखा है, हां चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, एक डिग्री से उपयोग के लिए गुरु, दिस वर्ड यू हियर चलना सीख रहे हैं। A high-end professional hearing such statements from a low-end officer because of our foolishness। हम क्यों स्लैप में आए? Because of greediness, लालच। 1 रुपया डालो 300 रुपया बन जाएगा एक दिन में। जाति की छड़ी है क्या? अगर होता तो नरेंद्र मोदी भी वही काम करता था, ऐसा हम लोग जॉब छोड़ दो, इस बदला 300 रुपया रोज देंगे। आप पढ़े लिखे लोग मान लो, इज इट प्रैक्टिकल? 300%, पर तुम 100% भी नहीं हो सकता है। It takes efforts to create wealth। रातों रात कोई मुकेश अंबानी ऐसे नहीं बना, forefathers have created the wealth। और हम आंख बंद करके suddenly we start believing those videos। वीडियोस की कैसा है, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा, because we have Instagram followers। I don't know, people are so addicted to Instagram। एक दिन अगर इंस्टाग्राम बंद हो जाता है तो समझना घर के जो मेंबर उनके ऊपर सामत आ गई,
सारा गुस्सा घर के मेंबर के ऊपर निकलेगा, इतने एडिक्टेड हो चुके हैं। और उसके अंदर वीडियो आ रहा है हर पर्सनालिटीज का, मुकेश अंबानी, नारायण मूर्ति, रतन टाटा, दे आर गिविंग टिप्स। इतना टाइम है उनके पास? हमारा दिमाग कहां गया है? वीडियो पे मुकेश अंबानी चलेगी, गुजराती में बोलते वापस, भाई लोग मारी कंपनी में स्टार्ट करी છે, હાઈ પ્રોફિટેબલ છે, હું તમને જે ટિપ્સ આપીશ એમાં ઇન્વેસ્ટ કરજો, હું જે રીતે પહોંચી છું મારો છોકરો અનંત પણ એ ફોલો કરે છે તો તમે પણ ફોલો. વાહ, this મુકેશ અંબાની quality care કરે. And suddenly that person will clicks on that particular video, and as soon as he clicks, you are entered into a WhatsApp group without your permission and knowledge. Not getting stopped. This is going on for so many days. So but doesn't do anything. This so many days it is starting. सर ये क्वेश्चन आप लोगों को आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा. तो you entered into a group के अंदर now suddenly you are watching there are 200 members, सब कोई का डाल दिया, आज मैंने रिलायंस में डाला 50,000 डाला, उसका 2 लाख हो गया. दूसरा और अरे तूने 2 लाख डाला, मैंने 20 डाला, उसका 1 करोड़ हो गया. वो जो बंदा नया एंटर हुआ वो सब कुछ सुन के वो खुद भी बाद में मुकेश अंबानी के जैसा सोचना शुरू हो जाता है. Then suddenly one wealth manager pops up, पर्सनल चैट आता है कि मिस्टर बाफना थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट. आप 1.5 मिनट से ये सब चैट्स पढ़ रहे हो, दे नो योर टाइमिंग्स. आप कितना टाइम को इस ग्रुप के अंदर ऑनलाइन हो, 1.5 मिनट तक तो यू आर इंटरेस्टेड, सर वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट, इट्स द सिस्टर कंसर्न ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज. और वो बोलेगा यस सर आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट 25,000. नहीं सर 25,000 मत डालना, फ्रॉड्स बहुत है मार्केट में. आप 5,000 डालो, हम 5,000 डालते हैं, बैंक अकाउंट दिया जाता है, we transfer that 5,000 to an account which we don't know whose it is. We transfer to that 5,000. Suddenly, within half an hour, we get 25,000 in our account. और वो बैंक मैनेजर वहां पे पॉप अप होता है, सर कांग्रेचुलेशन 5 गुना થઈ ગયા તમારા. And that भाई लोग अपना वाओ, ये मुकेश अंबानी की कंपनी हो सकती है, इसने मेरा 20,000 अगर डलवाया होता तो मेरा 2 लाख होता. लेकिन ये बिकॉज वो अंबानी है ना, वो कम इन्वेस्टमेंट में कुछ प्रॉफिट खाता है. फिर बाद में और लालच करते करते विद इन 1 मंथ 2 मंथ्स आई इन्वेस्ट crores of rupees. और यहाँ स्टॉप नहीं होता है, जैसे मैंने सबसे 1 करोड़ डाला, सडनली दैट वेल्थ मैनेजर इज और बाद में आपको सर मेरे पास और पैसे नहीं है, डोंट वरी, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया, रिलायंस का एक स्कीम है, जितना इन्वेस्टमेंट किया उसका 3 टाइम्स लोन मिलता है विदाउट योर केवाईसी एंड एनीथिंग. यू जस्ट हैव टू से यस, डू यू नीड इट? Obviously, knowledge, I say yes. Just press करके yes. Suddenly my loan is sanctioned off. And that wealth manager sir, अभी आपका इन्वेस्टमेंट 4 करोड़ हो गया, 1 करोड़ आपने डाला था, 3 करोड़ का लोन आ गया, अब ये 4 हम और इन्वेस्ट करेंगे, इसका 200 करोड़ बन गया. अब मैं थोड़ा सतर्क हो गया, बोला सर कितना प्रॉफिट हुआ इसके अंदर. Then the ledger comes out. ऐप आता है जिसके अंदर लिटरली आई सी माय ट्रेडिंग गोइंग ऑन, और उस ऐप के अंदर मुझे बताया जा रहा है 4 करोड़ का मेरा 15 करोड़ हो गया. तो आई टेल दैट पर्सन को कि काम कीजिए ना, 4 करोड़ मैंने दीजिए, बाकी का प्रॉफिट मुझे ट्रांसफर कर दीजिए. वहां पे वो बैंक मैनेजर बोलता है सर हमारी एक स्कीम है, बिकॉज ये अंबानी जी की स्कीम है, कोई फ्रॉडस्टर नहीं है, हम मेहनत का पैसा लेते हैं, हमारा प्रॉफिट 20% ऑफ योर 15 करोड़, तो 3 करोड़ पहले आप दीजिए और 15 करोड़ देंगे. वो भाई साहब और 3 करोड़, फिर वो 15 करोड़ का इंतजार करते रहता है. सडनली यू वन सब वन, and then he realizes मैं स्मार्ट नहीं है, तो बिगेस्ट फूल ऑन दिस. और फिर बाद में भागता किधर है? पुलिस स्टेशन. सीधा पुलिस स्टेशन भागता है, वहां 4 ऑलरेडी बैठे हुए हैं, 5 ये भी बैठता है. फिर उनको वापस और जाने की छड़ी चाहिए. एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड इमीडिएटली. फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू नो व्हाट इज द प्रोसीजर्स, व्हाट इज एन एफआईआर? लेके क्या करोगे, गले में पेंडेंट बना के घूमेंगे? I got an FIR, मेरे को मेरे पास FIR. क्या what is the use? आप जाके वहां पे बैठ जाते हो. और अभी तो लोगों ने now the central government has started, because the way people are running into the police station, it's difficult to control. So there is a helpline. Anyone knows the helpline? Central helpline 1930. And second, the portal. You are a professional, you should know this. Traffic rules. गाड़ी में चला रहा हूँ, मेरे पापा के बाजू में बैठे, उनको नहीं आता, फिर भी उनको रूल ज्यादा मेरे से ज्यादा पता है. रेड पे स्टॉप करना, जेब्रा पे खड़े मत करना, he never drives, and also he knows the laws.
You don't know the cyber risk. Because I am not a victim. मुझे जरूरत क्या है उसकी जानकारी देने की? I tell you indirectly आप कहाँ का victim है? यहाँ जितने बैठे ना सब victims हैं। कहीं ना कहीं अभी भी आपके मोबाइल के अंदर कुछ ना कुछ कांड चल रहा है, 100%. बैकएंड में कुछ चल रहा है. So this is where directly you go to the police stations over there now. FIR takes 2 months. Because there is a procedure adopted by the government. First investigation, then comes the registration of FIR. But FIR के अंदर भी the duty officer जो बैठे they don't have the power to register cybercrime cases. And inspector and above only has the power. Below that the PSI, the API, the constable they don't have power. वो सिर्फ आपका कंप्लेंट सुन सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन सिग्नेचर एक पीआई का, एक पुलिस स्टेशन में से 4 पीआई होते हैं, only 4 inspectors, out of which one is the senior inspector, one is the admin, one is the PR and one is the crime. अब वो क्राइम इंस्पेक्टर पूरे महीने में वो कहीं ना कहीं अरेस्ट करने को गया होगा, आप सोचिए आपकी कंप्लेंट लिखने वाला कंप्लेंट, तो 2 महीना गया जैसे क्रिमिनल्स नो, अगर पुलिस के पास जाएंगे तो 2-2.5 महीना लगेगा, तब तक तुम्हें पूरा अकाउंट साफ, और आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो immediately within half an hour या 1 hour it gets transferred to more than 100 or 150 100-150 अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. कहाँ ओपन हुआ वी डोंट नो, कोई असम में होगा, कोई मेघालय होगा, कोई गुजरात में होगा, एवरीवेयर इट इज ट्रांसफर्ड एंड देन व्हाट द पुलिस डज दे ब्लॉक दोस बेनिफिशियरी अकाउंट्स, उसमें से ब्लॉक कर देते. अब आप सोचो आपने 5 करोड़ डाला, वो 150 अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, वो भी और आगे 100 अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, बिकॉज़ इट टेक्स 10-5 मिनट्स. आरटीजीएस जरिए आपकी इतनी एक्सपेंसिव दी गई है, इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है. लेयर 1 लेयर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ लेयर पे पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग. अब वो पैसा किसी जेन्युइन ट्रेडर या जेन्युइन प्रोफेशनल के अकाउंट में एज अ फीस क्रेडिट होती है, वो भी अक्यूज है, because this is termed as recovery of stolen property, receiving of stolen property or non-available offense. अगर फीस दी, फिर 1 लाख रुपए सीए की फीस है, पेमेंट कर दी, आपको बैंक से ट्रांसफर कर दी, सडनली 15 दिन बाद आपका अकाउंट फ्रीज. Why? Because you are a recipient of a stolen property. मेरे अकाउंट में किसी का इसी साइबर फ्रॉड का पैसा आया था, तो मैंने आपको दिया, and now you are also accused. आप मुझे भी कर देगा आया. Now the police can come and take custody any time. Now this is where unknowingly you get into the trap of cyber criminals. अब रहा why the chartered accountants are taken into pass? Because ये जो पैसा है ultimately कहीं तो जाता होगा. करेक्ट, आप लोग सीए हो सर, तो थोड़ा मुझे नॉलेज दीजिए, मैं भी बाहर जाकर ये नॉलेज शेयर करूंगा. मैंने एक बैंक में से पैसा डाला, बैंक से बैंक में गया, तो पैसा वहीं घूमता है कि कहीं और जाता भी है? सर करोड़ों रुपए कैश विड्रॉल तो नॉट पॉसिबल. डाइवर्स करने के बाद भी देयर आर रूल्स फ्रेम्ड बाय आरबीआई, भाई यू कैन नॉट विड्रॉ मोर देन अ पर्टिकुलर अमाउंट. और क्रिमिनल भी बहुत स्मार्ट है, वो कैश विड्रॉ नहीं करते, वो पेटी ऑफेंसेस में करते हैं. सर ये आप लोगों का फील्ड है, मुझे गाइड कीजिए. अगर मैं कोई बैंक से बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर रहा हूं पैसे, तो व्हाट इज द लास्ट एंड, फाइनली पैसा कहां जाएगा? तो हांगकांग में जाने के लिए ऐसे जाएगा क्या? मैं बोलूंगा हाय आईसीआईसीआई प्लीज ट्रांसफर माय फंड्स टू हांगकांग, विल इट गो? व्हाट इज द प्रोसीजर? transaction. This money gets transferred into cryptocurrencies, and cryptocurrencies is not allowed in India. The trading in cryptocurrency is an illegal offense. अब प्रॉब्लम ये हो रहा है, आप नॉलेज लेके आ रहे हैं, मेरे कितने क्लाइंट्स आते हैं, मैं उसको बोलता हूँ प्लीज डोंट ट्रेड, आपके ऊपर पीएमएलए एक्ट लगेगा. अरे क्या सर आप हमको कभी डरा नहीं, हमारे सीए ने बोला है आप टीडीएस भर लो, इट इज लीगल. बोला भाई आपका ही सीए अंदर जाए, सीए को लिख के दे देना, वो लॉ बताता है फाइनेंशियल लिटरेचर, दैट्स नॉट अ लॉ, इट इज टीडीएस. अभी मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है व्हाट इज टीडीएस, एंड इट इज ऑन व्हाट, इट इज लेविड ऑन व्हाट, on income, not on investments. PMLA, sorry, इसकी जरूरत नहीं है. PMLA जो एक्ट लगता है जहाँ पे ईडी पिक्चर में आता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. एनी आइडिया ईडी कहाँ पिक्चर में आएंगे, कितनी इन्वेस्ट, कितने का ट्रांजैक्शन करेंगे तब आएंगे? बढ़िया आंसर आप लोगों को मुझे मिलना चाहिए.
आपका ही फील्ड है सर, ऑब्वियसली फाइनेंस जाना है और सीए यस 10 लाख के ऊपर ईडी कभी भी आपके घर पे आएगी एज अ गेस्ट, आपकी कॉफी देंगे और आपको लेके जाएंगे, चलिए सर हमारे साथ। और फिर ईडी आती है तो अभी तो इसको पता है व्हाट इज ईडी। आज से 5 साल पहले तो इनकम टैक्स मुझे डरते थे, बिकॉज़ आई एम ज्वेलर आल्सो, तो मुझे मैं बताऊंगा इनकम टैक्स वाले अगर एक दुकान में जाते हैं हमारा दुकान बंद हो जाता है, सारी चिट्ठियां गायब हो जाती थी क्योंकि अरे उसकी दुकान पे रेड है, जैसे मेरे यहाँ पे आ रहे हैं। अब ईडी से डरते इनकम टैक्स है वो क्या देखेगा, इनकम ही नहीं है क्या देखेगा, बस इतना आपका इनकम घुस जाए क्रिप्टो में। So this is where what happens why CAs are coming into us. First thing is to transfer the money from Indian rupees to cryptocurrency either to go cross border. Because India के अंदर exchange is not allowed. Ultimately आप invest कहाँ करोगे? Anyone dealing in crypto? No. मैं आपको email नहीं दूंगा कि आपको कोई recording नहीं कर रहा है, बस करने के अंदर कोई गुनाह थोड़ी किया है, मर्डर थोड़ी किया है। बोल दीजिए ना सर, गाइड दीजिए किसी को कर रहे हो 100%। मैं यहाँ पे क्राउड को देखते हुए बताऊं 20 से 25% लोग कर रहे हैं, 20 to 25% people will be doing, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा you are into it। सर अगर हम यहाँ पे सिर्फ एमआईडी से लोग पुलिस वालों को बुला के बोलो सबके मोबाइल ले लो कस्टडी में, या फिर उनकी भी जरूरत नहीं, मैं राजेश सर को बोलूंगा कि यहाँ का वाईफाई खाली हैक कर ले, सबका डिटेल आई कैन टेक इट फ्रॉम द वाईफाई राउटर। जितने लोग यहाँ बैठे सबके मोबाइल मेरे डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और उसमें पता चल जाएगा कि बंदे के पास कौन सा ऐप है, कहाँ गया है, कौन से मैसेजेस हैं, यू आर ऑलरेडी एन अक्यूज। तो क्रिप्टो में बिकॉज व्हेन यू वांट टू ट्रांसफर यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सम फॉरेन करेंसी, यू ट्रांसफर द फंड फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड एंड देन ट्रेड ओवर देयर। अब यहाँ से पैसा अगर मुझे बाहर लेके जाना है तो क्या प्रोसीजर है? मुझे सब यहाँ से 5 लाख रुपए समझो दुबई भेजने, इतना सारा अगर मैं जेन्युइन हूँ, अगर मैं जेन्युइन भी नहीं हूँ तो 5 मिनट मिल जाता है। नहीं हवाला नहीं, बैंक को जाता है, बैंक से क्रिप्टो में कोई हवाला नहीं है, इट इज वायर ट्रांसफर। लेकिन अगर मुझे जेन्युइन भेजना है तो मेरे को 5 से 6 दिन लगेंगे, इतनी डिटेल मांगेंगे जितना तो मुझे पता भी नहीं होगा। लास्ट में मुझे सीए से सर्टिफाई करवा के लेके आए, अरे लेकिन जब मुझे अगर क्रिप्टो में ट्रांसफर करना है बैंक वाले खुद मुझे बोलेंगे सर वेयर डू यू वांट टू ट्रांसफर, सिंगापुर, दुबई, नाइजीरिया, मैं बोलूंगा नहीं सर दुबई, ओके दुबई दिस मंथ है, सिंगापुर दिस मंथ है, यू गेट सर्टिफाइड, गिव मी द सर्टिफिकेट, इट विल बी डन। हाउ आरबीआई इज अलाउड, सर आरबीआई नॉट अलाउड। जैसे हम लॉयर्स हैं, हम किसी को फंसाते भी और किसी को निकालते भी, वैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैसे करना है वो आपको पता है, that I cannot claim figures. Laws are made, how to be twisted, that the professionals do. वो certification is given by chartered accountants. उस सर्टिफिकेट के बेस पे पैसा ट्रांसफर होता है म्यूचुअल फंड्स, और म्यूचुअल फंड से goes to the international borders, is traded over there, the same route is accepted back. Again it comes in the form of investment to mutual fund, और mutual fund से वापस हमारे अकाउंट में आता है। तो जो प्रॉफिट है बिकॉज फाइनेंस मिनिस्ट्री ने गवर्नमेंट ने नोटिस किया इतना पैसा क्रिप्टो में जाके इंडिया में आई नहीं है, सो गिव अस देन द लिबर्टी कि आप लेके आओ 30% टीडीएस करो, वी विल नॉट आस्क यू फ्रॉम वेयर कैसे मूव ऑन द प्रॉफिट्स, बट इन्वेस्टमेंट में ईडी हैज द पावर। एंड मार्च 27 2023 द पीएमएलए एक्ट वाज अमेंडेड, जिसके अंदर क्लियरली लिखा गया है सेक्शन 27 कि anyone trading in cryptocurrency will be punished for an imprisonment of 7 years. Now trading का definition क्या है? Buying and selling both. Both. अगर आपका रिकॉर्ड निकल गया, you are trading, immediately the law enforcement police, the local police, they will inform ED and ED will come at your doorstep. They will take your custody and then they will put you into a racket scam, because cryptocurrency is a scam. I am the legal advisor for Vazilex. तो मुझे पता है Vazilex का खुद का 2000 करोड़ लिया है 2 महीने पहले, 2000 crore was shipped by the cyber criminals. We are still hunting for it. जिसके अंदर हमने ऑलरेडी
बोटी निकाली है, तो whoever gives us the information, wherever this money is there, 20% commission will be given to them. 2000 करोड़ का अगर आप इंफॉर्मेशन मुझे दे दो कहाँ गए तो 400 करोड़ आपको मिलेगा। But it was one of the week that way. और क्रिप्टो में गए तो रेजिडेंट सिस्टम इज अ क्रिप्टो एक्सचेंज, क्रिप्टो में से क्रिप्टो में है। तो बट द कंप्लेंट वाज नॉट लॉन्च्ड इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पुलिस रिफ्यूज। आप खुद एक अक्यूज हो और आप हमारे पास लेके आ रहे हो, चोर के घर में चोरी में आप एक्सपेक्ट करो हम एफआईआर कर दें रिफ्यूज, देन वी हैव टू गो टू दिल्ली, दिल्ली में जाके एफआईआर किया, फ्लाइट से एसआईटी स्पेशल टीम बैठाई और वहां पे इन्वेस्टिगेशन किया, वहां पे रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर किया, लेकिन getting the footprints of that particular crime is very difficult because अगर मिल नहीं गया, अभी हमको वहां पे 700 crores मिल गया है, freeze किया है, we have freezed it in South Africa, but how to get it back to India is a pain. इंडिया वो पैसा वापस नहीं ला सकता, अगर मैं लेके आया I am in custody. Now these are the laws. अब यहाँ पे how professional, because जो mutual fund company transfer they require a certification from CA. And all these crimes, they have certification from CAs. और वो CA genuine है, fake है, that we don't know. तो immediately पुलिस का first investigation is started on it. किसने सर्टिफिकेट दिया, उसकी कस्टडी लो, अपने आप प्रोसेस पता चलेगा, लेकिन प्रोसेस पता ही नहीं चलेगा because even the CA doesn't know ये कौन से लेयर में जा रहा है। हमारे पास फॉर एग्जांपल आपके पास मैं आया हूँ, आई एम टेलिंग यू सर दिस एक सर्टिफिकेशन दीजिए, मुझे 10 लाख रुपया तुम्हें ट्रांसफर करना है, आई एम अ रेगुलर क्लाइंट ऑफ योर्स, आपको नहीं पता मैं क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा हूं, आपने मुझे सर्टिफिकेशन दे दिया और बिलीविंग गोइंग थ्रू द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, आपने सरकारी घंटे दे दिए, अब मैं इंटरनली वो 10 लाख रुपए क्रिप्टो में ट्रांसफर किया। नाउ इन दिस आर यू गिल्टी, आर यू गिल्टी, यस और नो? Documentation was सर मैं किया वाले सब ट्रायल के टाइम पहले तो बारात निकलती है ना, उसकी सोचो बाईपास सर्जरी बाद में, पहले तो हार्ट अटैक आया है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो पुलिस सब आती है ना, और जो जिस तरीके से आती है, एंड आई टेल यू फ्रैंकली दे हेट प्रोफेशनल्स, दे हेट प्रोफेशनल्स, कोई भी फील्ड हो, सीए हो, लॉयर हो, बिकॉज उनको एक तो गिल्ट फील होता है, यार ये लोग सब व्हाइट कॉलर कहाँ बैठे हो, हम लोग कहाँ हैं, तो दे वांट कि ये मिले पकड़ा, और मिल गया तो ऑब्वियसली वी आर सी most of the chartered accountants we are mostly from a business family or from a good families, they are not used to all this thing, so we try to cut off क्योंकि सर तुम्हें आ रहा है सब का एक तरीका कहीं नहीं किया जो भी दोनों तरफ से समझ, तो दैट ऑफिसर का जो उसका जो उम्मीद है वो बढ़ जाती है, वो क्रिप्टो में डाला है। अभी आई गिव यू एग्जांपल, मेरे एक क्लाइंट नासिक जेल में प्रेजेंट, इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही फ्लू टू सूरत, इज अ बोली सूरत आया अपने मम्मी पापा को मिलने, तो बॉम्बे एयरपोर्ट लैंड हुआ, और जैसे ही लैंड हुआ सीधा पुलिस आई, उसको कस्टडी में ली, हैंडेड ओवर टू नासिक पुलिस लेके गई, और उसके ऊपर चार्जेस लगे कि ही इज अ रैकेट हु इज टेकिंग मनी out from the country and is booked under the Cyber Act, the BNS Act, as well as the PMLA. That CA doesn't know also, he is based in Dubai. बोलते सर हमें नहीं पता, हमें पैसा मेरे पास आता है थ्रू इंडियन सीए जो इंडिया में बैठा है, वो मेरे को बोलता है कि ये पैसा दुबई में इन्वेस्ट करना है, आप ये थर्ड पार्टी है, आप इनको सर्टिफिकेशन करके आप दे दीजिए, लिमिट ट्रांसफर हो, और वो पैसा दुबई के अंदर क्रिप्टो में ट्रेडिंग होगी। और यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर कैसे हुई है, स्कैमस्टर्स जो उल्लू बना के आपको, एक लेडी है नासिक के अंदर, उस डॉक्टर, उसको एक कॉल आया डिजिटल अरेस्ट, they were arrested and then doctor paid 34 lakhs. Then she realized this was a fake call, she registered a complaint for 34 lakhs में से the trail 34 lakhs में से 2 lakhs रुपीस उस सीए के अकाउंट में एज अ फीस गया, only 2 lakhs out of 34 lakhs, तो 2 लाख में बाकी तो मिले नहीं, ये मिल गया और इसकी कस्टडी ली, 45 days होगी इसके लिए जेल। The lower court rejected, sessions court rejected, now we are going to high court. वहां भी उम्मीद कम है, because कोर्ट का नजरिया में क्रिप्टो नाम आया, no way, whoever is it, whether he is a professional, he is a businessman, or he is an investor, crypto trading, no way, go to Supreme Court, and going to Supreme Court is a dream, आप ऐसे ही अंदर रहोगे, then you have to go by default made as per the law, 60 days, 90 days, जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती अंदर रहो,
उसके बाद बाय डिफॉल्ट आपको निकालेंगे, तो आपका एक पीरियड हो जाता है 90 डेज के अंदर ही निकालेंगे अगर क्रिप्टो एफआईआर के अंदर आ गए। अब 10 में से 10 एफआईआर साइबर क्राइम में क्रिप्टो ही आता है, बिकॉज फाइनली द आउटपुट वेयर द मनी गोज इज क्रिप्टो करेंसी। और यहाँ पे सबसे बड़ा इश्यू होता है, बिकॉज आई कीप ऑन टेलिंग माय सीए फ्रेंड्स, प्लीज डू नॉट इशू सर्टिफिकेट्स if the money is going out of India, please verify. Why? There is a column, I think so. Purpose. Purpose. And plus, keep the copies of those. आप कॉपी रखो। सपोज अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपके पास आ जाती है, you have to give those copies. We don't know for what reason he has taken the certification from me, and this is the documentation which I verified and give it. Problem होता है second copy रखते ही। How will you prove that you don't know what is the transaction? These are small things, but क्या होता है कि वो नाम खराब होता है। और एक बार पुलिस आई, सर एक पुलिस नहीं आती, पुलिस वाले भी अभी सिंडिकेट बना के बैठे, बाटूंगा वाला पूछेगा एंटॉपी वाले तो किधर बड़े कोई क्रिमिनल है क्या क्रिप्टो मध्ये, तो बोले हाँ आता झटले एक काम करना त्याच्या त्याची डिटेल मला पाठव माझ्या अकाउंट मध्ये त्याला मी बनवतो। फिर वो तीसरा पूछता है, बिकॉज इनको आगे तो ये मिल नहीं रही है, खुद तो बताया ना सुपीरियर्स को कि वी हैव कॉट वन इस क्राइम के अंदर हमने किसी को पकड़ा, और पकड़ देंगे कैसे, बिकॉज 7th लेयर तक कहीं ना कहीं द सेम अकाउंट हैज बीन यूज्ड। Ultimately, there are only 15 to 20 people who are operating in India, for the major chunks for doing this trade. कहीं ना कहीं से सारे क्लाइंट्स अंदर पैसा वहां लेयर मिलता ही है, तो आपका लिंक कर देती पुलिस, लेकिन सबसे पहले पकड़ते हुए इजीली अवेलेबल, और जो कस्टडी में उसी को सेकंड में बना। एक क्रिमिनल के ऊपर 10-10, 20-20 एफआईआर होती है, अभी तो 70-80 एफआईआर होने लगते हैं पूरे इंडिया लेवल पे। नाउ यू जस्ट इमेजिन, मुंबई पुलिस कस्टडी ली, उसके बाद सडनली नागपुर पुलिस कम्स, नागपुर लेके जाती है, नासिक आती है, नासिक से फिर जुबली तलाई आएगी, फिर कश्मीर आएगी, आपकी पूरी जिंदगी will go into jail. So just depend, understand what will be the condition of family members. सबकी scrutiny भी शुरू हो जाएगी, because अभी ED picture में आता है, and once ED comes, the whole family is under scrutiny. This is where it pains me also the professional, because मेरे खुद के पहचान वाले 4-5 सी अंदर जो फील होता है, मुझे पता है, I can guarantee यार ये बता दे, पर आजकल क्रिप्टो ऐसी चीज है ना, नहीं पता चलता बेटा कि मेरे बुलियन के अंदर है ज्वेलरी, around 25 to 30% people are trading in crypto, 25 to 30%, सबको बिटकॉइन इशू, रातों रात सीधा 40 लाख 70 लाख रुपया बन जाएंगे, ऐसा नहीं बनता। There is a reason why the government has banned it, because there are no footprints, चीटिंग भी होती है। आपको मैं क्रिप्टो बेच दूंगा और सडनली आप 6 महीने बाद आपका क्रिप्टो गायब आपके लेजर अकाउंट में से, ऐसा हुआ है या सुना है? ऐसा होता है क्या क्रिप्टो गायब हो जाएगा आपका अकाउंट में से? एक वेबसाइट बना के नहीं, जेन्युइन अकाउंट, आपको जेन्युइन लेजर बना दिया, जेन्युइन डीमैट अकाउंट खोल के ले लिया, उसके अंदर आपका है, समझो अगर 5 बिटकॉइन है, 6 महीने तक आपने जस्ट बिकॉज नाउ यू नो द लॉ, ट्रेडिंग इज इलीगल, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैंने इन्वेस्टमेंट करके रख दिया, 6 महीने बाद आप सडनली आपको लेजर खोल के जीरो, कैसे? और ऐसे में जब आप जाओगे पुलिस स्टेशन आते हैं, वो पुलिस ऑफिसर पता नहीं चलता, बेचारे को आदमी साइड काले क्रिप्टो चोरी कर रहे हैं, मतलब क्या ध्यान धड़ आपने देखा, कारण कि इम्पॉसिबल, भगवान भी आएगा तो नहीं बता पाएगा ये क्रिप्टो गया किधर, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स सॉफ्टवेयर, इट्स अ सॉफ्टवेयर, वी डोंट नो हु इज द फार्मर ऑफ दिस क्रिप्टो, किसी को नहीं पता ये लेयर कहां पे। 6 महीने का प्रोग्रामिंग इज डन इन सच अ वे, इफ देयर इज नो ट्रांजैक्शंस इन दैट लेयर, ऑटोमेटिकली द बाइट्स विल कन्वर्ट गेट, मतलब आपका 1 2 3 4 will get converted to 0. These are the cheatings, that's why the government is banned it. तो इसके लिए प्लीज रिक्वेस्ट सर्टिफिकेशन मत दीजिए, और अगर इन्वेस्ट भी कर रहे हो म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट मार्केट रिस्क, simply cryptocurrency is subject to your own risk, or crypto investment is not a small investment, people take loans, yes. So it incorporates the even having like some of the audit points regarding CAG point regarding Behami funds. So we started accepting funds only from the registered bank accounts which are already having the KYC documents with us.
But then too, there are certain accounts which are already, which are always there in our bank account. Which we do not have any KYC documents with us. So is there any actionable thing which from our end, or like we should escape our refund those funds to? You should give it that. Because see, crime is such a thing, they don't have any limitation. Civil limitation period of the 3 years. Crime can be registered anytime. The law enforcement can come knocking anytime in the way incoming transactions. And if you don't have any KYC, for example, finance. सुना है ना? नहीं ट्रेड करना तो फिर भी पता है हाँ, अभी मैंने जब पूछा मैडम कि कोई ट्रेड करता है सबने ना बोला लेकिन फाइनेंस के सबसे गर्दन हिली आपको पता है फाइनेंस क्या है तो आप नहीं करते हमें तो लगता है ट्रेडिंग करना अलग हमको इनको रखते हैं सब मैं भी वैसे बोलता हूँ लेकिन बाद में सब लोग क्या होते हैं दारू की दुकान में क्या मिलता है मैंने अंदर नहीं गया दारू मिलता है तो फाइनेंस वाज अ क्रिप्टो एक्सचेंज इसको बैन कर दिया गया इंडिया के अंदर they are running in Singapore but it is banned in Dubai क्यों because they never used to keep KYCs of the people who are invested फिर लॉ के then the IT Act got amended 2021 में amendment आया you know we are known as intermediaries they have to keep the KYCs then finance started taking accepting KYCs but KYC fraud KYC जाने लगे because KYC के अंदर 3 या 4 misset format है वो देने लगे उसके बावजूद also then also the law the courts did not accept no thus having custody of KYC doesn't prove the authenticity of the banks we need the authenticity by transfer of funds funds कहाँ से है उसके because ED is looking after finance only monetary trades so this department is given over so if there is you don't have any KYC then you have no defense for yourself if ऐसा किसका है then I assume if you don't have any defense I assume it is yours in Dubai also it is not legal. In Abu Dhabi there is one center which is exchange which is open. But over there also it's very difficult to get training over there. All these are getting operated virtually by the dark web. But लेकिन सारे बोलते हैं ना सारे शरीफ चोर दुबई में बैठे शरीफ चोर because वहाँ पे कैसा है what the law over there says हमारे कंट्री में से अगर किसी एक सिटीजन को भी अगर चीट किया we will take him into custody हमारे कंट्री में चीटिंग नहीं हो रही है वो आपकी कंट्री में हो रही है चेंज योर लॉस so that's why everyone is going over there सिंगापुर आप लोगों को पता ही होगा इट्स अ फाइनेंशियल हब पैसा ला पैसा लेके जा बिल नॉट आस्क unless until there are no terrorist funds there's some clauses there but how you are doing it there are no licenses and everything required लेकिन exchanges भी वहां नहीं है they're just transferring money in Singapore exchanges कहीं small time countries में नहीं वहां पे exchanges है these are the problems which the lawyers are also we are also facing the judges are also facing the courts कि इसका actually modus operandi समझ में नहीं आ रहा इसको start कहाँ करना खत्म कहाँ करना लेकिन इसका एक ही चीज है which I tell awareness don't fall prey to it जैसे कोविड आया था हमारे पास दवा थी फिर भी आप भगवान का आशीर्वाद सब लोग यहाँ पे थे क्यों awareness we took care of ourselves the same way cyber के अंदर you have to clean your own garden आपको अपना खुद का ध्यान रखना है first thing is don't let greediness enter your brain fast money is not easy money और सेकंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ये भूल मत जाना ये आप जो गैजेट यूज कर रहे हो उसका हर चीज का बैकअप हो हर चीज इट्स वेरी इजी टू गेट द फुटप्रिंट्स ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आप व्हाट्सएप चैट कर रहे हो आपने डिलीट कर दिया आपको लगता है डिलीट हो गया नो वी कैन रिट्रीव इट कहीं से भी निकाल देंगे आपका चैट और आपके सामने प्रोड्यूस कर देंगे तो वो दिमाग में से निकाल दो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस निकाल दिया तो कुछ नहीं मेरा फुटप्रिंट नहीं मिलेगा Third, don't believe in an unknown person, digital world. It's a crime world. Don't believe. क्योंकि आपने अगर एक बार क्लिक कर दिया, आप उसके अंदर 1001% में अभी इतना बोल रहा होगा, अगर मैं भी क्लिक करूँ मैं भी फंस जाऊँ। क्योंकि जिस तरीके से वो लोग ट्रेन है, the way digital arrest concept, तो सोच के भी अभी मैं यहाँ बोलूँगा तो आप लोग बोलेंगे यार बेवकूफ था क्या? कि डिजिटल अरेस्ट हो गया, लेकिन हमारे जो बोलते हैं ना बेवकूफ था क्या वो खुद ही अरेस्ट I have got one sitting judge just around 15-20 days back. I had to resolve his issues. He was so feared. He called up one senior IAS officer.
आईएएस ऑफिसर ने आईपीएस को कनेक्ट किया, आईपीएस ऑफिसर बाद में बोला सर इसको करेंगे, मीडिया में दे नहीं सकते, एफआईआर करने, इट इज जस्ट सिटिंग हाई कोर्ट जज, कैसे करें? देन डायरेक्टली थ्रू द कोर्ट एडमिन रजिस्ट्रार के को मेरे पास कॉल आया, मेरे बापना से आई एम वेरी फेयर, मेरी नौकरी है, मैं क्यों सर मैं डिजिटल हो गई। अब हाई कोर्ट जज अगर ऐसा बोले तो पहले मेरे को डाउट आ रहा है कि इंडियन हाई कोर्ट बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। How to verify that वो कॉलर है भी चल जाए को जब मतलब सर पहले तो मुझे डाउट आ रहा है कि यू आर मीडिया जज आल्सो ना, आर यू ह्यूमन बीइंग आल्सो ना, बट आई टू वेरीफाई दैट यू हैंग द फोन, आई विल कॉल अप, आई कॉल्ड अप माय सोर्सेज इन द कोर्ट एंड रियली द पर्सन हु इज द पीए ऑफ दैट जज टोल्ड मी यस सर, वो दिन से सर का पूरा वातावरण चेंज है और रिवर्स ऑर्डर्स पास हो रहे हैं, वो ऑब्वियसली इज नॉट इन स्टेट ऑफ माइंड, देन इमीडिएटली आई गेव हिम अ डोज, मतलब सबसे पहले सर वो आप डिजिटल जो उनके मोबाइल है उनसे दूर रहो, डोंट गिव इट द मोबाइल फॉर 2-3 days, टेल देयर फैमिली मेंबर्स टू कीप हिम अवे फ्रॉम देयर मोबाइल, राउटर्स अगर है घर के अंदर शट इट ऑफ, वाईफाई कनेक्शंस निकाल दो, कीप हिम अवे फ्रॉम द डिजिटल वर्ल्ड, और 2 दिन तक टेक अ लीव, टेल हिम टू टेक अ लीव, देखो क्या होगा दूसरे लोगों को बेचारे को अफेक्ट होगा बाय रिवर्स ऑर्डर्स, एंड लिटरली ही डिड द सेम थिंग, देन ही केम टू, देन ही वेंट फॉर मेडिटेशन और पता चला ही वाज hypnotized. Yes, this is not a cyber hypnosis. ये ऐसी चीजें हैं जहां हमारा स्मार्टनेस नहीं चलता। How can our brain be taken into control? We don't know, because हम इतने addicted हो चुके हैं डिजिटल वर्ल्ड से, we cannot stay away from that gadget for a minute. इतने सेशंस ले चुका हूँ लोगों को, मैं समझा के करता हूँ, learn the habit, जैसे भी अभी यहाँ पे हम लोग फास्टिंग करते हैं, नवरात्रि के फास्ट कर रहे होंगे, करेक्ट सर, कितने लोग कर रहे हैं यहाँ पे? आप कर रहे हैं सर फास्टिंग, आप पेट से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? पेट से करें ना, सर पेट में भरपूर खाइए, फास्टिंग आप मोबाइल से कीजिए। इट्स ऑल माइंडसेट है, मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं खाना या नहीं देखना, नहीं देखना, फिर भी आप देखेंगे, नहीं दिन में एक बार आप टच करेंगे, मैंने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल सर व्हाट्सएप की बात नहीं करूँगा, मैं मोबाइल की बात करूँ, आप देखेंगे मतलब देखेंगे, गारंटी है। और माइंडसेट चलिए कोई आपको मैसेज बोल रहा हूँ, आपने अभी तक जवाब ही नहीं देते, यस यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड, मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं देखना तो नहीं देखना, नहीं ना, इसको रख दो ही रखो, 2 दिन तक आप फास्टिंग कर रहे हो, 2 दिन तक फास्ट कर रहे हो, 2 दिन तक मोबाइल को टच नहीं करोगे, सर एक्सेप्ट एक्सपेंस इम्पॉसिबल। हमारे जे हमारे जैनों में भी मैं बोलता हूँ मार्क्स सही रहेंगे, आना सर जी 28 करवाना है, जो करवाना है 28 मोबाइल का करवाना है, यहाँ फास्ट कर रहे हैं, वहाँ सेल्फी क्रिएट हो रही है और रील्स निकल रही है, हम माइंडसेट तो गलत जगह पे जा रहे हैं, and automatically then you are under the control, shopping experiences ऐसा बन गया है, एडिक्ट बन गए, जब तक Amazon का पार्सल घर पे नहीं आएगा मुझे नींद नहीं आएगी, मैं पहुंचूंगा ये पार्सल करना चाहिए, these are all addictions and the criminals know all these things, and because we are professionals we can change our habit, we cannot expect from the common man, but हम घर में चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली होम विल चेंज, और जैसे हमको फॉलो करके तो बच्चे भी करेंगे, आप ही मोबाइल नहीं चलाओगे, आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं जब देखो तो मोबाइल पढ़ा देते हैं, कोई इनडायरेक्टली आप भी तो वही कर रहे हो, बीवी भी मोबाइल में, तो कहीं ना कहीं उतने एडिक्टेड बच्चों, जिससे सब जगह फाइनेंस सबके ऐप्स है, सबके वॉलेट, सबके बैंक अकाउंट उसी के अंदर, और उसी में से फिर बाद में आपका ट्रांजेक्शन होगा, so everything is watched. So these are the ways where I request, because main topic था कि CS को कैसे बचाया जाए, regarding the law is a certification part, so please do not give, because if you land into arrest, it will be very difficult for you to come out, because कहीं ना कहीं वो सर्टिफिकेट क्रिप्टो के लिए ही यूज होता है, भले वो डिजिटल अरेस्ट हो, the modus operandi of the scam will be different, but ultimately the money transaction will be crypto only. And crypto is being used for terrorist activities, human trafficking. तो ये सब क्योंकि अभी तो और अगर जैसे भी तो हम ढूंढ रहे हैं ऑलरेडी द पुलिस द होल एनआईए शूटिंग सर्चिंग दैट पर्सन, वो जिस दिन मिल गया बिकॉज़ उसके पास 1.5 लाख करोड़ ऑफ क्रिप्टो करेंसी, वो जिस दिन मिल गया उसको साइबर टेररिज्म का लगाने वाले प्लस देश द्रोही, because उसके ट्रेड में लिए that money even US is behind that person, but it's
मतलब मिल नहीं रहा है, उसका फुटप्रिंट ही नहीं मिल रहा है डिजिटल फुटप्रिंट कहाँ पे, और वो पैसा इज गोइंग ऑन टू यूक्रेन। मतलब आप सोचो कि कहाँ से कहाँ पैसा घूम रहा है और कौन से एक्टिविटी में यूज है। सो कहीं ना कहीं हमारा योगदान उसमें होगा। तो law will not see once even if you are donor contributing a rupee assisting that crime, you are accused. So it's a request. Certification देने से पहले verify the credentials of the person who is coming to you. Secondly, even if you know that person, please tell him आप उसको डराना शुरू करो। क्रिप्टो में करना है पहले बता दे। मैं खुद ऐसा ना हो कि मैं पुलिस को बता दूं कि क्रिप्टो में करना है। वो अगर जो बोले आपको सच सच बताएगा, बिकॉज ऐसे जब तक डराओगे नहीं कोई सच नहीं बोलता है। हमारे पास भी आते हैं ना, सबको एक कुक अप स्टोरी लेके आते हैं, जब कोर्ट से पता चलते कि यार ये तो एक्चुअली है ही नहीं, तो कुछ और ही बताया मुझे। दैट डॉक्टर और वकील, बस ये कोई वकील बोलते हैं हमारे यहाँ पे भी, वकील साहब, तो हमें लगता है कि मेरे को बोला, मेरे को सीए को बोल रहा वकील से। तो वकील और डॉक्टर से अगर कुछ बताया मतलब छुपाया, he is responsible behind. We are not responsible. We should not take the burden on us. We should not take personal ground to this. क्या इसको ये बचाने के लिए हम दे देते सर्टिफिकेट? No. Follow the rules. Go with the rules. पुराने CAs और लॉयर होते थे ना, हमें लगता है कितना एप्टीट्यूड है इसमें। नौकरी नहीं पसंद नहीं, बोलता देखा कोई नौकरी करूंगा, ये तो नहीं करूंगा। तो हम लोग भी बोलते थे कितना अकड़ है, बताते हैं 50 रुपए स्टैम्प मारने के लिए। 50 रुपए स्टैम्प नहीं, स्टैम्प लगा। अब नौकरी जाते हैं तो 100 रुपए में डेट तो बात लोग क्यों नहीं देते, लेकिन आज उनकी भी हालत देखो, दे आल्सो गेटिंग दिस। So ample of issues are there, so it's just a request, and I think I will end over here. I will tell my colleague friend Advocate Rajesh Lombe, because he is into cyber security. Backend part कैसे करते हैं? He is an expert in it. He is a CISO of HDFC. Yes, मोबाइल well, example क्या बोलूं? अभी बोला जाता है कि अगर आपको एसएमएस आएगा, संस्था का निकला था एसएमएस मोबाइल में आए, तो मेरे साथ हुआ ठीक जाकर मेरा पेज का तो मालूम पड़ा, मोबाइल से मालूम पड़ा। तो मोबाइल को बस एसएमएस देखकर कैसे मालूम? सर मेरे टेबल पे दो मोबाइल, वन इज ओनली फॉर फाइनेंस, वन इज फॉर एक बात के लिए। सारे सोशल मीडिया गांव वालों के अंदर, तो मेरा फाइनेंस उसमें कुछ भी नहीं। नो इंटरनेट कनेक्शन, डेटा प्लान ऑन करूंगा जब मुझे बैंकिंग करना है, बाद में ऑफ कर दूंगा। नो वाईफाई कनेक्टिविटी लेता हूँ, जब उसमें सोशल मीडिया के उसको टच ही ना करूंगा। मैं कब टच करूंगा? जब मुझे ट्रांजेक्शन करना है या कोई ओटीपी आएगा तो, बाकी नहीं। तो पड़ा रहता है मेरे बैग में। तो मतलब दो मोबाइल लेंगे तो ऐसे ही सबके बाद 2 सिम कार्ड निकाल दो, या 95% सबके बाद 2 सिम कार्ड मिलेंगे। 95% 2 सिम कार्ड मिलेंगे, because criminals also they enter into your mobiles through social media. आप ऐप जब डाउनलोड करते हो जैसे you all give permissions, आप सारी परमिशन पहले ही दे देते, फिर आप बोलते मेरा मोबाइल हैक हो गया। सॉरी, लीगली इट्स नॉट हैक, लीगली यू हैव गिवन देम द डोर टू कम। फिर बोला सब हैक नहीं चलेगा, तो पकड़ में और क्या मिलेगा? आप पैसे भर रहे हो, आर यू पेइंग एनीथिंग फॉर दैट? but sir one question you're talking about trading in crypto is illegal. I don't need that word legal illegal. But what is it? You say It's not a permitted. crime under the law. It's a crime, that is something illegal which is a crime. So यही पे ऊपर No, because our parlance, if you say something is a crime, what does it mean? Something which is not legal is a crime. सर मैं तो मैरिज और कंज्यूम कर रहा हूँ 31 लाख, Permission will limit. Oh, ठीक है, that is exception. तो ये क्रिप्टो में सर आपका जो लाइबिलिटी लिमिट से बाहर ही जा रहा है। No, my question is, Yeah. if you say that crypto is not permitted. Yeah. How does Income Tax Act is making a provision for TDS and income to be taxed? यही सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, Because it is absolutely. सुप्रीम कोर्ट में वही चल रहा है कि एक गुड टॉप ये समझ में नहीं आ रही। एक तरफ गवर्नमेंट बोलती है टीडीएस हो, दूसरी तरफ बोलती है अरेस्ट हो। तो अभी ये आके अभी तक वो पूरा वो खिचड़ी है। Sir, trading and interest में फर्क है नहीं? यस, So what happened question is. See, I tell you. जैसे मुझे बताना नहीं चाहिए था, लेकिन बता देते हैं। What to understand? मैंने क्रिप्टो लिया, लेके रख दिया। Sorry, I'm not trading, I'm just purchasing. But अभी तो नीचे का समझ जब बेचूंगा तभी की बात। तो frequency is not in this. यस, और लेकिन उसमें भी टेक्नोलॉजी क्या, 6 महीने तक अगर आपने कुछ नहीं किया तो जीरो हो गया।
ये बहुत स्मार्ट लोग हैं ये, they want you to trade. इसलिए कुछ क्रिप्टो से ऐसे जो 15,000 का सॉफ्टवेयर है, 15 डेज के अंदर अगर आपने ट्रेडिंग नहीं किया, ऑटोमेटिकली जीरो, तो आपका पैसे तो गया ना इनडायरेक्टली। Somebody is purchasing a crypto, there's an exchange, you doesn't know where it is actually. Yeah. So your money is going from a bank account, right? It is going via app. Banks has refined it because I'm trading Bank of Baroda, Union Bank, सबको वो लोग रोज से आप लोगों को पता है। So CA certificate there is some local. But purchase के लिए ना sales agreement. So look at it. Now they are making up banks. Everybody is They dying do agreements. Now this is where your institute and the banking industry, the banking institute, they should come together because there is a miscommunication. जो चल रहा है, फिर सीए सर्टिफिकेशन दे दिया तो हमें ट्रांसफर कर दिया, नो, आज तक कोई बैंक का रजिस्टर नहीं हुआ, जो मैं हमेशा पुलिस को सबको बोलता हूं, सबसे पहले उनको कस्टडी लो, दे आर द कस्टोडियन ऑफ माय मनी, और वो पैसा हाथ ऊपर कर देते हैं, पैसे चले गए, ऐसे क्यों चले गए, जाते ही आप भेज रहे, यू आर परमिटिंग दैट हाइकर टू कम इनटू टेक अवे दैट मनी, और यू आर परमिटिंग, अभी आई फाइल ये स्टॉक मार्केट स्कैम में आई एम फाइलिंग अ पिटीशन इन द कोर्ट, पैसा गया वो वापस नहीं मिलेगा, जिंदगी में वापस नहीं मिलेगा, now how to recover it, I am filing against the banks, So banks, but how banks ना बोलते आपने तुझे ट्रांसफर किया है, how अभी लाए, any answer? जब मैं मुझे अगर बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ये आरटीजीएस सर के अकाउंट में शीट दिएगा, और फिर मैं बोलूँ अरे तुमने किया कैसे, is the bank liable? Yes or no? Anyone who is agreeing, yes. Bank is responsible. From the back end part, they have to follow the rules framed by RBI before transferring that money. Yes, sir. सर एक तो मेरा सबसे बेसिक क्वेरी ये था कि अगर आप अकाउंट पे ही ऐड करते हो तो बैंक ने तो ऑलरेडी लिमिट डाल के रखा हुआ है कि 25,000 ट्रांसफर होगा, ठीक है, लेकिन मैंने ये नोटिस किया हुआ है कि एक या दो केस में ऐसा है कि 20,000 रुपए भी ट्रांसफर हो गया विद इन 5 मिनट्स, तो हाउ इज दिस पॉसिबल एंड हु इज लायबल फॉर This is where I am getting. तो अगर ये सिचुएशन में अगर आपको केस लूं, आपके दिमाग में तो आ गया, आओ आप इसको कैसे फ्रेम करेंगे, ऐसा लो बताइए ना, आपको दिमाग में आ गया, लेकिन इसको कोर्ट के सामने कैसे प्रोड्यूस करेंगे, Bank has formulated a cooling period which is not followed. where is it written? I am the banker. आपने मेरे पे एलिगेशन लगा दिया, सर कूलिंग पीरियड आपने कूलिंग पीरियड ये करके अपने पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो मुझसे तो मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा, तो डिफेंस था, सर वेयर इज इट, शो मी द प्रोविजंस, we are professionals, we have to go to provisions, what is the provisions, As a use in the bank, they are adding the very basic. loan is not a provision. We mutual fund invest करते नीचे लिखते हैं subject to market risk, are they liable? That's the reason. Cigarette is injurious to health, are they liable? सिगरेट पी के अगर कोई कैंसर से मर गया, क्या मैं सिगरेट कंपनी को घसीट सकता हूँ कंज्यूमर कमीशन में, क्या वो बोल सकते हैं कि नोट लिखा था सर इट इज इंजीनियस टू हेल्थ, नोट इज जस्ट एन इंडिकेशन, इट्स नॉट अ लॉ, see over there here comes where I hate the bankers, there are 5 laws which has to be followed by the bank, Banking Regulation Act, the RBI Act, the KYC norms, the IFC, RTGS, NEFT trading laws, as well as the beneficiary, इस सबके रूल्स है आरबीआई एक्ट के अंदर, ये रूल्स निकाल के जो उसके अंदर प्रोविजन है अंडर सेक्शन 2(3) of the RBI of Banking Regulation Act, the banker has to verify the credentials, after that only he has to put digital signature, then only it goes, it can get transferred. These are the things which we have to do. Now this no one knows, as we are lawyers we have to study those laws, bring it to the notice of the court and make them guilty of negligence. And once negligence is established, they have to pay. This is what my success ratio is. I hate the bankers for failing to perform their duty properly. It was not possible without a banker or client conditions. Either they are personally involved or their negligence is involved. 99% negligence is involved because they want to first what their costings. They don't want to upgrade their softwares. They don't want to hire
high end technical people. हर आदमी अपना कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करता है, but cost cutting में see the type of crimes which are increasing. अब ये कोर्ट तक कोई लेके नहीं जाता, बिकॉज़ 95% हमारे लॉयर्स को ये लॉज नहीं पता, पुलिस को नहीं पता, कोर्ट को नहीं पता, लेकिन लॉज है, आपके सीएस को भी नहीं पता, लॉज है, हमें उनको खाली खोल के निकालना है। और ये आर्टिकल 370 देखा है, उसके अंदर बताया कि हाउ इट वाज एस्टैब्लिश्ड, कैसे उसको लागू किया गया, एक मेहनत किया जिससे मिला क्या, जम्मू कश्मीर की लाइब्रेरी तक गए, वहां से निकाला, बिकॉज इट वाज अ रिटन लॉ, और रिवॉर्ड नहीं हुआ, बिकॉज इट वाज रिटन। द सेम थिंग इज दैट लॉज आर रिटन, वी डोंट नो वेयर इट इज, pull it out and bring it before the notice. These are the laws which the banker has to follow. We are just certifying authorities. कुछ सपने में नहीं दिखा है कि ये चोर है कि क्या है। अब वैसे जैसे I had a conversation with the jewelers, उनका भी यही प्रॉब्लम है, उनके सारे के सारे अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं। They are also taken into custody for receipt of stolen property. पैसा उनके अकाउंट में रही, ज्वेलर में कस्टमर हो गए, ज्वेलर है के पास गया, चेक खरीदा, मैंने बैंक से ट्रांसफर कर दिया, इन्होंने जीएसटी पेड बिल दे दिया मुझे, नाउ इट्स अ जेन्युइन ट्रांजैक्शन, सडनली 5 दिन बाद इनका अकाउंट फ्रीज, बैंक के बाद बैंक को नहीं, सॉरी देयर इज अ डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन इन योर अकाउंट, 5 लाख रुपए कोई आया है जो जौनपुर से यूपी से कंप्लेंट रजिस्टर है, तो ये प्लीज नो, आप उस आयोग से बात करो, आयोग को फोन कराया, बोले आप इधर आओ, फॉर स्टेटमेंट विद डॉक्यूमेंट्स, अभी यहाँ से जौनपुर जाएंगे, वहां जाने के बाद गारंटी नहीं है, ही मे बी टेकन इनटू कस्टडी। These are the problems which are really true because of the cyber issue. तो ये टॉपिक ऐसा है कि जितना लोगों ने उतना कम पड़ेगा, सब लेकर जाऊंगा ना तो बहुत पड़ेगा, भी है टाइम शॉर्ट है, another speaker also. So precaution के लिए ना आज become a professional. I keep it open. जहाँ से पैसा वो मैं नहीं दूंगा, आप कहीं से भी लेके आओ पैसा। डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर को मेरे साथ दवा प्रिस्क्राइब करो, मेरे को बुरा नहीं होना चाहिए, डॉक्टर बोलेगा सबको ऐसे ही दिक्कत होगा, मैं क्या करूँ, कोई बीमार हो गया तो आएगा ही नहीं मेरे पास। You mentioned that you are maintaining 2 mobiles, one for social media and one for your financial transaction. But the mobile which you are maintaining for financial transaction cannot be hacked. Obviously, anything can be hacked. Nothing is impossible. Digital world है. Then how you take the precautions? कोई तो क्वेश्चन है, हर चीज आप मेरे से एक्सपेक्ट करेंगे तो सर मैं आपके पास आऊंगा, मैं बोलूंगा सर मुझे गाइड कीजिए ना, मेरे को पैसे कैसे ट्रांसफर करना है, मुझे गाइड नहीं। Sir, we are late. और साथ में लो और मैं क्या हूँ, हम लोग एक ही जगह वकील वकील सर सुबह सुबह आया हूँ, आज कोई बोली करवा दो। I think we should let the. Yes, thank you very much. Good morning, everyone. My name is Rajesh Dore. I work with SDFC Arbour as a Chief Information Security Officer. So I'll be talking about cyber security. So I work very closely with CA professional for the audit purpose. So can anybody tell me the definition of cyber security in short? What is cyber security? That is information security. Cyber security actually. I always used to carry topics. So I ask questions and if anybody gives answer. Good second. This one? It's screen share. This one, no? Yeah.
Just give me a minute. So I'll be just giving some information about ISMS and BCMS. So cybersecurity is nothing but it's a okay. You know what is internet? It's a collection of multiple computers on the internet. So cybersecurity is the second name of internet. So cyber is a virtual world which is selected across the lot of network servers. So I'll be trying to give you some information about cybersecurity. What is the need of information security, basic of information security, ISMS, cyber threats, vectors, best practices we need to follow. See, nowadays what happened ki CA profession has been evolved with the evolution of technology. So new CA has to be well versed with the IT systems because a lot of what is happening and CAs are doing the system audits. So they should be aware about what is cybersecurity, what is internet, what is technology, what is IT, what is software, what is database. So this is the evaluation of computing program. So just small question. Are you aware of IT? Please response. Information technology. Actually, income tax समझेंगे, income tax समझेंगे. So you are well versed with IT. So I'm not talking about operation of IT, working on laptop, about IT systems. What is network? What is database? So how many people are CISA over here? DISA and CISA. So you must be doing the audits and everything. So you must be following certain process to do audits, the control domains you need to check. So computing programs has been evolved from the desktop to laptop, analog, digital, smartphones, and all these things. So we are aware of that. So why information security is important? See, every data what organization have are not critical data which need to be saved. So some data are public data, some data are internal, some data are confidential, some are secret. So the information which is having certain value, it's a value in commercial, it's a value in reputation. So that information is very important for us to save. And that securing that information is known as information security. The basic of information. Information is an asset which has value, provide meaningful context to the organization, and consequently need to suitably protected by applying certain security posture. Like if you go into organization and see the example I'll give you, I have a lap mobile and I have some information on my mobile, and all the information on the mobile is very critical for me. It talks about my personal phone numbers, personal photos, banking, and all these things. So I have to protect that mobile, right? So how many people have antivirus on the mobile? Only one, two, three. So बाकी किसके पास मोबाइल है वो डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. That's what I feel. Data है ना important. So same way organization also apply certain technology to prevent the data in the organization. So hack, data compromise, data leakage, hacking, it happens. iPhone allow me करता करता है. है. करता है. See, iPhone has a separate features in the OS itself. It has a pre-deployed antivirus or some solution or queries we can say. But on about that, you can install antivirus also. You can do that. Because see, Android and iPhone, Android by default give access to all the application, but in Android, in iPhone, it asks you. And it never gives you the access to the core OS of that particular iPhone. So hacking is difficult to on iPhone. But tools, Antivirus hacking cannot be done. see, it prevents at a certain limit. But even though if application is some malware is coming and getting installed on that, and if it is zero-day attack, then it can't be protected. So every information have certain okay. Information is built upon three principles: the confidentiality, integrity, and availability. Confidentiality means how confidential this information is. It should be protected. It should not be shared with anyone. It should be only with the authorized person.
Integrity means only authorized person can access the data, change, manipulate, update. And availability means available of data to the right person at the right place and at the right time. So these are three principles of the information. If this any of these three principles get compromised, that means you have breached. And the major objective of all the organization is to protect the CI of the information. Raw data and unorganized fact that need to be processed. So where in data lake, there are a lot of things are coming. A lot of business people are doing some running AI ML process and trying to get certain meaningful information about the from the data lake. So there is a raw data. Once you churn, it massage, it gets some information, have some certain value, reputation of financial, it becomes the information, critical information. So like I said, it is a triad of information security. It's a CIA. You can ask me a question, no? Please. So let us take a real-time example, real-life example, how this particular information security happens. In scenario one, unauthorized access to medical records of a policyholder. So that means confidentiality. Because medical records are PHI, personal health information, and that are critical. If that get compromised or gone to the wrong person, unauthorized person, that means there's a compromise of confidentiality. So it's a breach. In scenario two, claims amount being modified without authorization. That means you are impacting or attacking the integrity of the data, that you're making changes in the numbers and the database. So that is known as integrity has been compromised, which lead to the data breach or hack. System outage resulting in delay in claims processing. So that is availability. If you see DDoS attack, so DDoS attack, what happens? If a hacker want to sabotage or impact the business of the competitor, what it does, it hires some hackers and start sending requests to that particular server of the particular. If I take the example of XYZ bank, and it is a net banking, and if I want to get that particular availability of the net banking to be impacted, I'll create a automated bot attacks on that particular server portal. The portal will keep on responding to the hacker's response, and the responses are in lakhs and crores per second. So what happens? The utilization of the server, CPU, memory gets impacted, and server goes down. And the people like us who are actually want to do the transaction on the server, internet net banking, are not able to do that. So that is the impact on the availability of the business application. Protecting assets through information security. So security is built upon three pillars: people, process, and technology. Lack of people will with the ability, like if we have a people who don't have technical skills or don't understand the business and all these things, you will not be able to protect the data. You need to skill people over there. At the same time, if you're not following any process to do certain activity, you're doing like haywire, there's no process defined and things are happening. Again, there's a problem of information security impact. And the technology, if the technology, like Sir said, a lot of people are using outdated applications, wherein Sir has given some good example of bank, where he can able to get the money refunded from the bank. So people like banks and other organizations should always need to have that case. There should be a technology upgrade, should not be working on the backdated, outdated softwares. So there's a regulation from the IIDA, from the insurance industry, asking them to obsolete all the obsolete hardware, software in the system should be immediately squashed or discarded and should be upgrading the system immediately. So this is the regulatory norms given by the IIT to all the insurance industry. Because what happens if you keep the outdated system, like I am having OS, operating system 2008, which is outdated. So the service packs updates from the Microsoft will not be available. So your system become vulnerable for the attacker to attack. Plus, you will not be having antivirus for the particular outdated system. So the data sitting on a server is very vulnerable and can be hacked anytime. Anybody can come and take the data from you. So the types of information assets. So information assets can be tangible and non-tangible. When I say tangible, it can be a paper. Non-tangible, it can be a data, which is available on servers, on laptop, desktop, USB, and all these things. The presentation I'm carrying on my USB, it's an asset. But this is a public asset. I can discuss this with the public because this data is available on internet. So this is not
my confidential data. So organization always follow certain framework to protect the data, because every organization like financial BFSI sector, the data what they are dealing in with the customers' personal information, there is PI, and it's very critical for the organization, because now the DPDP Act which is going to come, the fines and all these things are very huge. So even a small data breach can give a hit of 250 crore penalty to the organizations. That you are aware of that, I'm sure. So this ISMS framework is nothing but a group of amalgamation of policies, procedures, certain standards we need to follow, certain behaviors of the employees. And the objective of the ISMS is to very simple way, follow the right policy, have a right policy, follow the right procedures, and ensure the data is not compromised at any point of time. So ISMS hierarchy structure. So is there any question on ISMS? So I'm sure the people who have done the CISA must be knowing this. ISMS, what is ISMS? So it's a group of policies. Policies means it's a commitment of management. What is their objective or what is their action will be taken to protect the information which there in the organization. That is the policy. Procedure is what to do. Basis on the policies, the procedures are defined. So the middle level management define the procedure and follow in the business as usual activity. Guidelines and SOPs are standards which are given by the regulator, given by certain standard and NIST frameworks are there. Certain ISO standards are there which we need to follow, because these are industry standard followed across the globe. So certain set of procedure and policies should be as per to the required standard. And certain records are there. Records are nothing but a reports. So combination of all this information is known as ISMS, Information Security Management System. So I'll be talking about risk assessment, and it's important. I'll just walk through all this to you. Risk assessment is nothing but a systematic process to understand and identify what are the critical information I'm having. So I will not use the word information, I will use the word asset. So what are the critical assets organization is having? What are the values of those assets? What are the data we have a critical? What are the process in the organization? There are multiple departments who run the business. What are the processes are critical? What are the departments are critical? We have to understand that, and basis that we have to define the criticality. It's a low, medium, high. Basis that we have to define certain preventive measures or control to make sure this critical process or critical assets are not impacted due to some disaster or due to some cyber attacks. So this is the process we have to do. It's a risk assessment. In risk assessment, what we do, we identify the vulnerability, regulatory compliance, protect financial assets, strategic decision making, and ensure business continuity. Business continuity means if your business is impacted, if there's an impact of cyber attack or DDoS attack, if your business is down, then you have to ensure that the disaster recovery site should be there, which will enable you to do the business during this downtime period. So it's not supposed to be 100%, but at least 20-30% you have to make sure the business should run. At least in insurance, we have to make sure that claim should not be stopped. Investment department should not be stopped, and contact center. So these are three critical departments. What we ensure that in disaster in insurance, we make sure this keeps running 24/7. So risk management workflow diagram. So we have to identify the critical business. That's what I have already explained you. Calculate the inherent risk. So there are certain formulas, certain algorithm we need to follow to calculate this risk. And this is very technical, so I will not discuss that over here. Then at the last, we have to understand and define the risk treatment. If there is something risk, then what are the treatments we need to have? Risk treatment is simple. Like one department is very critical. If something happens to that, what will be my second step to make sure the business runs as usual? So that is known as risk treatment. This is asset identification. I already explained you. We have to identify the asset owner, asset custodian, asset user. This is a CI calculation. This is very technical. I will not go through this, but just try to understand that key. Confidentiality, integrity and availability of the particular information asset should be work out for whether it's a high risk, medium risk, or low risk. I'll take a pause over here. Any question here?
No question? समझ रहा है सबको? It's going up. समझने की कोशिश कर रहे हैं सर। So that's the reason कि अभी क्या हो गया कि CA जो new CA है, they should be well versed with IT because a lot of system audits CA people only take because it's a part of a stat audit. So when you take a stat audit engagement, the audit comes into that. System audit also comes into that. And most important thing is that you being a CA professional, you are dealing with the customers' PI information. You're dealing with the income of the client. You understand the personal history. You have the information about the customers' banking. So you should be knowing about this cyber security and how to prevent the information what you are having with you. Because ultimately, the DPDP Act will also apply to all the professionals over here. So information are classified into 4 different classifications. This is the standard classification. In military, there's a different classification. We don't follow that classification over here. But in industry, we follow the confidential, restricted, public, and internal. So any data which is only for organization, that is internal document. The presentation, what I'm showing you, it's a public document which can be accessible, uploaded anywhere. Restricted is only restricted to the respective or critical authorized people, like business plan and all these things. And confidential information like budget and everything, which is authorized, only authorized person can access that. So these are the risk evaluation. So this is very technical again, what I say. We have to calculate certain parameters. So what are the risks, what are the impact and likelihood of the occurrence will derive the risk severity of the particular asset. Is high, medium, and low. So once you evaluate the risk, you can apply certain controls to protect that particular risk. Sorry. So you can apply the controls to protect from the particular risk. Like you have to define certain control implementation in implemented recently started operator, manage the requirement is fully satisfied. So these are the various types of controls what you get. So we have a risk treatment plan. Once you identify the asset, you have to do the evaluation. Basis that evaluation, you have to do the risk treatment. Basis that you have defined the risk treatment plan. The cyber threat vectors and best practices. I'm sure this particular slide you will like this. So these are type of phishing. So what are the cases comes to Bafna sir? So there are 2 types. So one is you intentionally do like trading and all these things, and one is you get the victim for phishing. पैसा चोरी हो गया, GPS से चला गया, and all these things. So these are various type of phishing. The smishing is there. Phishing, the smishing means you get the information on a mobile saying that your electricity bill is pending. Click on this and pay the bill. That is smishing, which comes on a message. Phishing is something about you get a call from the person. Spear phishing, HTTPS, social engineering. So all these things are part of phishing, and phishing comes under the gamut of social engineering. Impersonation. So in last couple of months back, there was one trend was going. Organization CEO is sending some WhatsApp messages to his employees asking him to buy certain vouchers and send it to him because he has to give to someone else. And this messages used to come in the night at around 2, 3, and 4 o'clock. People used to buy MD का message आया तो कोई कुछ पूछेगा नहीं, then he'll call back. He'll immediately action 10-15-20 हजार का voucher लेके उसको दे देगा. So this is not impersonation though. Hackers impersonate his MDs and get this vouchers again. Any question here? The social engineering root cause, the root cause of any well. The people are the weakest link in security. That everyone aware of that. Things 99% of attacks happen because of the people. Employee go to the wrong site, provide the official email ID on the site, or click on certain things comes to what is his email box. Like in our organization, we do the phishing exercise every quarterly. So last 1 month back, we have done the phishing exercise. Out of 10,000 employees, there were around 800 people who got victimized of that. So that was a planned phishing we have done that. So we have certain vouchers we have sent, we have
send a message or that your ITR is having some issue, you have to immediately contact income tax office and investors. So I've done that, and 800 people have already compromised. And out of that, 550 people have shared their credentials of the system, of the core system, like 80 credentials. So these things happens. Dumpster diving. So dumpster diving is nothing but see all the what the documents we are working, we take a printout. So what do we do? We use it as rough paper after some time, or we just throw it in a dustbin. So hackers look for such kind of documents. So he collects the documents and try to correlate the multiple documents to get some meaningful information. So what we need to do, we need to trash the document. Actually, you have to tear the document. There's a process of trashing in organization. So these are the ways of social engineering wherein the information are. So normally when cases when they are traveling by air, get the package, go up here, you also should destroy that also. Because all the Yes. out of the bar. You have to do that because that have the information about your Everything you're. itinerary, traveling, and all these things. You should do that. See, nowadays, if you go to Chariot, no, VT and all these things out of this university, you will see the Bhelpuri wala having Aadhaar card documents and all these things. Sir ने काफी बार example दिया है उस चीज का और मैंने भी देखा है वो कि Bhelpuri wala is having this particular paper Aadhaar card लोगों का उसमें भेज के दिया है all these things. So we should avoid all these things. And whenever you're giving any information or any document to any organization to process, like if you're giving some Aadhaar card to some passport office or giving to some credit card, bank credit card, you have to write the reason over that. These cards, these documents only for the purpose of this. And but don't give documents without any proof. And avoid giving digital document. मैंने WhatsApp पे भेज दूंगा for our convenience we say. Don't do that. Because that gets further circulated to multiple people. और उसका क्या होता है आपको पता है. So how to spot the social engineering attacks? So आपके पास जो मेल आता है तो आपको कैसा पता है कि ये social engineering है या actual है. So there are certain tips what I want to give it to you. So this has happened based on the researches what we have done. We have our own community and we just discuss like the way you have your own community and service. We also discuss all these attacks and all this things with the community of fellow CISOs. And we have some information that the spellings or grammar used in that particular mails or SMS are thoda gadbad rehta hai usme. Then you can have suspicious that okay, this must be a fake SMS or fake mail. उसमें और एक चीज है कि in that mail urgency is there. Like I give an example, the MD of the organization send a message to a person, WhatsApp message. Immediately I need a voucher, I have to gift it to one of our client. That is urgency. Generic subject line and improper use of copyright. By the way, how many people have been victim of, I will not ask this victim, how many people have seen fake phishing email or phishing SMSs? आप लोगों को सबको आया? So what they did on that? Ignore it. We never reported anywhere. आपने ISP को report नहीं किया, like cyber crime. Nowadays, SMS comes, call comes. No, there is an urgent document to be delivered. Please give your address. So have you reported to ISP? When I say ISP means Vodafone, Tata, Jio, DND पे ला रहे हैं अपने. You have to enable DND. Immediately report to the ISP and make sure that your DND is enabled so you won't get such kind of messages. 1930 पे जब आप नहीं लेगा वो उनका आपके साथ आप विक्टिमाइज हो गए तभी देगा वो अदरवाइज नहीं देगा. Same. Chaksu. .gov.in गवर्नमेंट का है राइट टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया का वहां पे जाके वो नंबर डाल दीजिए जहां से आपको कॉल आ रहा है या ईमेल आ रहा है एंड इट विल बी ब्लॉक बट आपको स्क्रीनशॉट डालना पड़ेगा साथ में. ओके सर आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो संचार साथी करके गवर्नमेंट का ऐप है उसके अंदर सब है अनसॉलिसिटेड कॉल्स रिपोर्टेड फ्रॉड्स ईमेल्स. आप क्लिक कीजिए आपका स्क्रीनशॉट अटैच कर दीजिए जो नंबर से कॉल आ रहा है वो डाल दीजिए ऑटोमेटिकली इट विल ब्लॉक बाय ट्राई इटसेल्फ. मेल किया इग्नोर किया तो फिर दूसरा कॉल है अनआइडेंटिफाइड कॉल आंसर. यस
संचार साथी Chaksu, Chaksu. SHU चक्षु तो भी calls आते ही है. So those will be international calls. Never to speak. Now the voice can be removed and that can be misused. Very good. Perfectly. All those calls. ये क्यों गलती से जब भी जाते हैं मालूम नहीं तो हो जाता है, बात नहीं करता, अवॉइड करता, पता चला जाएगा अपने ये फेक है तो. हमारे साथ भी होता है, मेरे साथ भी हुआ है. But the moment I feel that this is something fake, then this parcel, I got couple of calls, same thing. पहला एक दो बार उठा लिया मैंने, बाद में फिर पता चला. So the best thing is that you avoid giving your numbers on the social. Don't use the numbers, don't give your numbers to mall and everything. रेस्टोरेंट में जाते हो, मॉल में जाते हो, मैगडी में जाते हो, नंबर देना अवॉइड कर दो, आपको कॉल्स कम हो जाएंगे. एंड अवॉइड वो तो मांगते हैं लेकिन उसको देना नहीं है. व्हाट इज द रीजन फॉर आस्किंग मी? व्हाट इज द रीजन? मैगडी में मैं गया था, मुझे नंबर मांगा था, प्लीज गिव मोबाइल नंबर. आई आस्क्ड देम व्हाई. So you'll get an electronic bill. I don't want electronic bill. Give me the paper bill. I never gave. So it's not mandate to give. Avoid giving. There are loyalty programs. Numbers and all these things. लास्ट वीक में वीडियो में गया उसने मैं नंबर लिया, नंबर मैं गलत बता दिया, नंबर गलत है, उसने मेरे को बिल उसका मोबाइल में बिल आएगा, इतने लोग कितना आप लीगल बिल. No, you should demand that. You should do it. Electronic bill लेना ही नहीं. So next is malware. So malware is nothing but antivirus. Sorry, my bad. Malware is nothing but a virus. So there's a different kind of viruses are there. Ransomware, Trojan horse. Trojan horse is a virus which steals your passwords and credentials. Spyware is a virus which actually enable your audio and video on a mobile and spy you. You will not come to know ki kya ho gaya, kya nahi ho. There are certain adwares are there, certain rogue softwares are there. You download the softwares from the Play Store or things. So not all softwares are trusted one. What they do, they just copy all your information, create a CNC tunnel. When I say CNC, it's a hackers connected network, where it will pass all the information about a mobile to that particular server. You will not come to know. It happens in backend. So all these classes are part of malware. So we discussed about unidentified call, about social engineering. So don't call a number sent in a voice mail. Whenever you get any call on a voice, missed call aata hai, don't call back anything unless until you are sure that this number is belongs to the known person and all these things. And don't trust caller IDs. Even if I'm a true caller, if Bafna sir is calling me, a hacker can use the name of Bafna sir and call me by having the different number. So I can see Bafna sir is calling me, I immediately pick it up. Just try to see and check the number kiska hai, kya hai, because things happens very wrong if you pick up such calls. So internet and email security. So I will only say one thing to you in this particular slide. So there are a lot of things happen. I can say here. Only one thing: never use. Acha, who are using Wi-Fi of this hotel? I will actually verify the Wi-Fi connection first. Yeah. And then if I want, I can. अभी किसने कनेक्ट किया है? किसने किया? So never use open internet. Wherever you go, bank, but if you go to bank, station, hotel, airport, never use their Wi-Fi, because hackers are just waiting for you guys to come and connect their system on the Wi-Fi, and then you get compromised. And it's very easy to compromise. Physical security. So this is related to organization. You should always have access card. Do not do the tailgating. Report the ID card loss and all these things. This
Securing yourself with the and the organization. So how to secure is very simple. You should have antivirus, whether you're using laptop at home, laptop in office, mobile phone, iPad, iPhone, whatever you have, you should be secured with the antivirus. So in business continuity, I don't want to discuss more on that because this is related to the business wherein uh, if an organization feels that the business is important and so they have to ensure that the business continuity is there in place. So there are certain process we need to define how this 10 out of 15 department, what departments are crucial. Basis that they have to do the risk assessment, risk rating, they have to do the business impact analysis. Business impact analysis means what is the impact if there's a downtime of certain process for 1 hour or 2 hour, what will be the value of money loss if the systems are down for 10 hours. Basis that you have to define the business disaster recovery side. So if the if your RTO and RPO is less, the cost of the disaster is high. If RTO and RPO is high, the cost of the setup is low. RTO and RTO is the recovery time objective. What best time you want this particular system is down? If the system is down in 10 o'clock in 12 o'clock right now, within how many hours you want to recover that particular business? Within 2 hours or 3 hours or 4 hours? That is a recovery time objective. And RPO is recovery point objective. So if the server is down in the night of 12 o'clock, so what is the best last one password of backup you need to have? You are okay to lose the data of 4 hours, that is a 4 hours RPO. If you are okay to lose the data for 8 hours, that's 8 hours RPO. If you want to, if you are not cannot afford to lose any data, so that is a 0 RPO, then you need to have a real-time backup and synchronization of data should need to be happen. So these are all part of business continuity and disaster recovery. So I think that's all on cybersecurity. So this is business continuity. I don't think so that is important for you. So these are don'ts and do's. So just I request you to just read out. Hackers का data कहाँ से आ रहा है? I didn't got the question. Anybody can do that. And कहीं से भी आ सकता है ना? From my mobile also I can hack this mobile. So you never know who is the hacker and all this. So okay, I'll give a very classic example. What is it? Definition of hackers. So hacker is only one person. The intention makes the hackers different. Okay, so there are various types of hackers. Black hat hacker, blue hat hacker, purple hat hacker, red hat hacker, white hat hacker. So black hat hacker is the intention is very bad. So his job is to just hack and create problem for the people and paisa. White hat hackers are the opposite of the white hat hacker. So white hat hacker, black hat hacker. White hat hacker ensure that the organization people hire white hat hacker to see the systems and check whether these particular systems are vulnerable or not and try to hack them. So that is ethical hacking, we can say. There are purple hat hackers, there are blue hat hackers, there are different stages of hackers. Only one hacker is very dangerous, who is called as script kiddies. जो नया बंदा आता है, जैसे नया बंदा आपका सीए बनता है, वैसे हैकर भी नया बनता है. वो काफी कुछ करता है जो उसको पता भी नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है. He don't know what he's doing. There are a lot of scripts available on internet due to ChatGPT. A lot of queries you can get from the internet. A lot of applications are available. The script is just to learn. He randomly reading on the internet. वो किसको जाके हिट होगा पता नहीं, क्या डैमेज होगा पता नहीं. अगर सिस्टम हैक नहीं होगा तो उसको पता नहीं चलता कि हैक हुआ है, because he is having a very limited knowledge. So that's the reason we call it as a very dangerous hacker. Yes, sir. So the question is that you have multiple passwords and you are saving it in Excel to just make sure you are aware of them. Not taking any security tools to safeguard the password. Can you repeat the question in the mic? Sir, each of all the clients, password are same in our computer or the application that we are using. So how we are how to safeguard that? So the password and application is where it is with the client only, or it is in your system. So you have to have a defined AD technology. You need to have antivirus over there. You need to have password management. Is there any tool that we can save the password from there to safeguard?
So Active Directory is itself is a domain tool which have all the password credentials. So you must be having AD. So this particular application is accessed by your customers over the internet or how it is? I'll give an example of Billman. Billman is a software where you find income tax data from all the organizations. So what we do is we make a master and we save the password over there. So now what are we doing? We are just making this application is our computer or our servers. So this is only controlled by the antivirus. There's nothing else that we can do. So it is good advisable. Okay, so you must be having your internal IT security team. We do have, but then obviously also things are. So there are certain password best practices we need to follow. The password should be complex. The password should have limited length of 8 characters with a multi, and it's alphanumeric with the special characters. These are a password process you need to follow. Plus, you can also hash a password. So even if it is stealed by the hacker, it will not be known to him because hash cannot be reversible. So I'll show you a document over here. I just got it just for your information. I thought if I had time or chance, I'll show it to you. So this is a password management process. So as an organization, we define certain standards for having a password. So being a CISO auditor, I'm sure you must be knowing this. See, the guidelines say the authentication, authorization, accounting, password storage, password reset guidelines, system management, enforce password expiry, history. Enforcing password history means you should not be using the password which was there three months old password. नहीं आ रहा है? ये चलेगा नहीं ये दो बस ये जो करो ये हो बस स्क्रीन शेयर करना You can see this. So if you see password management standard, you have to enforce the password history. Password history means you should not use the old password. There should be minimum password age that after 30 days, after 15 days, not 15 days, 30, 45, 60 days, the password should get reset. Otherwise, it should get locked. The minimum length should be 8 characters with alphanumeric with special characters. You should have encryption or hashing of the password. So whenever the IT create the password, you should get it and force that the user when he log in at the first time should be changing the password. The default password is known to and it's available everywhere. And there should be one-time password or token. So these are the best practices you need to follow if you want to ensure the passwords are secure in the organization. There should also be setting you need to do that if the password is wrongly attempted 3 or 4 times, you should get locked. तो ideally बैंक वाला वैसे करते हैं हम लोग भी ऐसे ऑफिस में ऐसे ही करते हैं हम लोग we should lock that. ठीक है any questions? Application. So what we do, we have a partner who do the dark web monitoring, okay, for fake app, fake paymenting and all these things. So 24/7, we just keep scanning the entire internet for any fake links or fake apps. The moment we get the information there's an application available as a fake, we immediately take it down and send the legal notice to the person who has initiated that created the app. So there at a certain point of time, the hosting service provider will cooperate to us. At that time, we take a legal team into picture. And also, what we need to we focus on
awareness program within the client, within the employees, because unless until they're educated or made aware, they will they will become the victim of such kind of fake apps, fake phishing and all these things. So recently IIDA has given, like last year, they have circulated that all the organizations should follow. October month is a Cyber Jagrita month. So in that Cyber Jagrita month, there are certain things what we have done. We have communicated to all the customers over WhatsApp, over email, over social media. We have given them the understanding about the best practices. We have also tried to make them aware of the fake app, fake payment link. So that's the best what we can do. Okay. That's, publicity? Yeah. Yes. I can see you. Yeah. Acha, So we would like you to Okay. come here and let. Thank you. Thank you very much. Thank you. Mohan sir, इधर आओ. I won't be taking much time of yours since we are running short on time. I'll just show 2-3 videos as to how our data is compromised. This is the pen drive. Pen drive. रुको रोने दे PPT. Yeah, एक second play कर. Doing policy change for, users, yes. This is already. Now, and we just went Sometimes you're shocked that how our data is compromised nowadays. I'll just show you a video. Google is effectively a $500 a year service because that's the value of the data that you're providing. Value If of they use 10% of that data, they're going to be the most valuable company ever. Companies that you've never heard of claim to have about 1,500 points of data on the average American citizen. Is it hard to go through it and actually find specific details about a person? No, that's super easy. Within a couple of minutes, you can figure out what people voted for, what psychological problems they have, what parties they've been to. They're saying it's because I agreed to the latest terms and conditions on iTunes. No one has read the terms and conditions. No one in the world. To the extent there have been contract decisions, they've held that these terms and conditions are valid. And what if your phone came with these long terms and conditions said, well, if you use the phone, the government can wiretap you? That would be insane. But that's the kind of world we're living in. Anything that's been digitized is not private. And that is terrifying. For the government to get information from a Google or a Facebook is a lot easier than the government doing it itself and putting a wiretap on our phones. You have to put these powers into somebody's hands. Like social networks in recent times. If you have something that you don't want anyone to know, maybe you shouldn't be doing it in the first place. Well, that's always what scared me, was if there's some sort of automated system that just red flags you based on the search term. You can see that surveillance measures are being used to silence protests before they even happen. Boom, NYPD SWAT, bulletproof vests on, their guns drawn. I was like, are you being serious? Are you actually holding me because of a tweet? So we were locked away in Lewisham Police Station for 25 hours. All these powerful institutions, they're not subject to the same invasions of privacy as the rest of us are. So far, the population seems fine with it. If they weren't, they know who to call. But that's where we give our data. That's how our data is compromised. So we shouldn't be shocked nowadays that if someone calls you by your name, if someone tells you that you live here, we shouldn't be shocked because we from ourselves have given access to them by agreeing on each and every link. Whenever we download an app, we click on that agree button. So in short, we are giving permission to them. As Sir has asked, okay, for internet banking, you need to have a separate device, right? If you have a separate device, you need to make sure that you don't have any unwanted applications in that phone. You'll have to make sure that you just keep internet banking or whatever applications are necessary for your field. That's it. No other unwanted application like social media application should be downloaded on that particular second phone. You need to have a proper antivirus, paid antivirus, not a free version. So paid antivirus has a feature of password keeper as well. So when you want to store your passwords, in the paid antivirus, you can store your passwords as well. I'll show you one more video as to how the social media is having a watch on us, keeping a watch on us. These are all retired personnel from Google, Facebook, Instagram, and everything. What I want you to know is that there's a documentary on Netflix as well. Every single Tuesday is carefully monitored in the book.
lot of people think Google's a soapbox and Facebook's just a place to be my friends again. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your technology next to them. I was the co-inventor of the Facebook Bafna, which is the president of Google, Twitter, Instagram. There were meaningful changes happening around the world because of these platforms. And we remind you about the flip side of that coin. People were worried about parts, life comes up, and we can play that with value, and we can play with truth. The whole generation is more anxious, more depressed. I always felt like fundamentally it was a force for me. I don't know if I feel it. Facebook discovered that they were able to affect real world behavior without ever triggering the user's awareness. They are completely clueless. They can spread 6 times faster than Jews. Each and everything you monitor, your liking, your scrolling, your typing. There's no need for people to come together. There's no need for people to share. That's important. We don't know what we really do. If we want to control the population, there was another thing that Joe was trying to say so practice. When we build these things, they have responsibility of change. The intention could be how we make the world better. If technology creates mass chaos, loneliness, more polarization, more election hacking, more inability to focus on real issues, which helps that. This is checking. So I suggest you guys, you should watch Social Dilemma on Netflix. I know I'm promoting that series, but yeah, it is worth watching because it shows how you're digitally stopped. Basically, your thumbs, your typing, your scrolling, everything is monitored by the social media platforms because you have given them access by clicking on agree button. So you shouldn't be shocked that why am I receiving advertisement when I'm viewing through that ad, you get a separate ad of the same particular thing that you should buy a purse. If you're seeing a purse advertisement, then you get a separate platforms ad that on Mantra, you'll get an pop-up that you should buy this purse. So why is it happening? Because you have given access to those social media platforms. I'll show you one more video and then we'll. This is a अंतर्वेद आया है कि 85% लोग इस वॉइस करने के जाल में आ गए यानी कि बहुत ही लोग वॉइस कर लेते हैं ये लोग Currently, deepfake is going on. This is a old scam, no voice cloning. सबसे पहले तो आप शब्द है जो हम इसमें पैसा मांगा मैं इसमें पैसा मांगा शब्द उसके ऊपर शुरू कर दो आप कहेंगे आप 1 मिनट बस काम कर दीजिए मैं आपको आंसर मिल जाएगा मैं मुझे बताना है पूरे कस्टमर के सब का साथ में हम अपने रेट का मुद्दा उसे जो करने की कोशिश कर रहा है मैं पति मेरी बेटा सही है कुछ ही करने की कोशिश कर रहा है तो आप जितना मात्रा में लगाइए और आप पता चलेगा मुझे कि सोच जाएगी आप लोगों का भी इतना पैसा ट्रांसफर नहीं करना है उनका इमोशनल हो जाता है कि हाय मेरा बच्चे का एक्सीडेंट हो गया आप कम से कम 2 मिनट दीजिए इंक्वायरी करिए वेरीफाई करना इमीडिएट ट्रांसफर मत करिए वेरीफाई करने के लिए आपको एक बहुत अच्छा चीज है जब आपका आदमी बनकर के कोई कॉल कर रहा है तो आप उनसे एक पावर वाला सवाल पूछ लीजिए जो आम आदमी को नहीं आता यानी नानी का नाम दादी का नाम किसी को नहीं होगा तो जो अपना घर का बारे में This is one of the way you can tackle deep fake and voice cloning. इस तरह के पारिवारिक सवाल पूछने से भी आप परिवर्तन कर सकते हैं कि आपके साथ शुरू नहीं है और आपके साथ किसी तरह फैमिली सवाल शुरू हो भी जाता है तो 190 So in the end, to safeguard yourself, awareness is the only thing that can safeguard yourself, nothing else. You need to be aware. जैसे बोलते हैं ना सतर्क रहिए जागरूक रहिए वैसे ही रहना पड़ेगा हमें frankly. Thank you. DG Yatra is safe. DG Yatra is safe because it's official government made application. That's all. No, you just need to secure your device, not the application. आपका device secure रहेगा तो obvious बात है फिर तो application unwanted. If device is not secure, then there is a problem. 100% yes. Anyone can penetrate into your device then. Even iPhone users are not secure nowadays.
Pegasus करके आप सॉफ्टवेयर एक चल रहा है आजकल, everyone must be aware now. That's to stop spy basically. It's a spyware made by Israeli. So अभी वो कैसा है? I'll just send you a text message and your phone is compromised. So that's a high-end software जो आजकल common man, जो common hackers के हाथ में भी आ चुका है. So that's how dangerous it is nowadays. So it's all awareness. That's it. You just need to be aware. Thank you. To give a common vote of thanks, I will request our past convener, CSA Mahmood. It is my pleasure to give vote of thanks to today's three speakers. Thank you, Advocate Pankaj Bafna, for creating awareness regarding cybercrime. Ignorance and greediness is the main reason behind the cybercrime. He explained this cybercrime with the help of practical examples and his practical experience. The session was informative, and we should also create awareness among the society regarding the cybercrime. Rajesh Dongre from HDFC Argo, you give the importance of information security, importance of antivirus, how to protect critical information, types of phishing. Thank you for giving the awareness regarding the same. Advocate Darshan Bafna, awareness, how you should aware in general, what should do and how to use the mobile applications, and whether to give permissions to different applications, what should be avoided. And with this, I request all the members to give a big clap to three speakers. Thank you. And we will break for 15 minutes. We will break for 15 minutes, and there's an announcement I would like to make. The WIC references manual is available with us at a very discounted rate. Can you, I would request everybody to give their request.